under Section 128A and amnesty scheme under Section 16(4) of the GST Act 2017. The timing of this conference is particularly significant as it follows the union budgets presented by the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharamanji. Her proposals aim to harmonize economic growth with robust tax compliance, and this forum provides an unparalleled opportunity to deliberate on their implications for our profession and the nation. I extend my deepest appreciation to our advisor, Senior Advocate Ajay Kumar Rastogi ji, Chartered Accountant P.K. Agarwal, and former President Bihar Chamber of Commerce, and CA Suman Kumar Naik for their invaluable counsel. My sincere thanks to the conveners, Advocate Smith Saurabh, Advocate Jagdish Kumar, the Conference Secretary, Advocate Neeraj Kumar Naik, Joint Secretaries, Advocate Rajiv Kumar, Advocate Ashish Prasad, and Advocate Amrit Kumar Agarwal. And of course, Conference Treasurer, Advocate Gyaneshwar Prasad, for their tireless efforts. We are also indebted to the national leadership of All India Federation of Tax Practitioners, Advocate Samir Jani, National President, CA Advocate S. Venkatarami, Deputy President, Advocate Santosh Gupta, Secretary General, and of course, Advocate Vivek Agarwal, National Vice President, present on the dais. As well as Bihar Income Tax Bar Association Office Bearers, led by Senior Advocate Ajay Kumar Rastogi ji, for their unwavering support. A heartfelt salute to our core team members, sponsors, and the conference secretariat at NK Nayak and Associate for orchestrating this event seamlessly. To conclude, I may say, may this conference ignite insightful discourse, foster collaboration, and a chart of progressive path for our tax fraternity. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir. Thank you for your kind words, sir. We invite the Bihar Income Tax Bar Association President, Senior Advocate Ajay Kumar Rastogi ji, to offer mementos and felicitate our distinguished guest, Honorable Mr. Justice Rajiv Ranjan Prasad ji, Judge, Patna High Court. Sir.
Hello. Now comes the most awaited moment, sir, when we have the honor of facilitating our beloved senior advocate, TV Pati, sir. Recently, he has designated as a senior advocate of Patna High Court, a remarkable achievement and deserves our highest admiration, sir. Let us all give him a big round of applauses with a standing ovation, sir, in recognition of his exceptional contribution to the legal fraternity. We now invite Senior Advocate D.V. Pati sir to the dais. Yes, sir. So you have an answer. It's yes. So nice of you, sir. We would like to request Advocate Shweta Kumari come on the dais and introduce Senior Advocate D.V. Pati sir. Warm welcome to each respected dignitaries, esteemed colleagues, and distinguished guests. Myself, Advocate Shweta Kumari from Patna, member of AIFTP and Bitba family, along with Advocate Komal Raj from Patna, specialized in income tax law. It's our privilege to host this momentous Patna Tax Conference 2025 as we all gather here for an engaging discussion with experts in the field of tax, law, and justice. Let's make the most of today's conference and look forward to enriching our knowledge and connections. I hope you are as excited as I am. So let's get started. It is an absolute honor and privilege to welcome a senior advocate, D.V. Pati sir, who has an extensive and distinguished career in the legal profession. With his exceptional expertise in taxation and corporate law, Mr. Pati has represented prominent clients like Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation, and Tata Steel Limited. His unparalleled experience and expertise are reflected in some of his notable cases. Birla Corporation Limited versus State of Bihar, one of the provisions of VAT Act were declared ultra virus and law is amended in the light by state legislature, mentioned under section 73(2) and 54(5). Bihar State Electricity Board versus MS Tata Steel Limited, which influenced tax law interpretation in Bihar. MRP case of Lupin and almost of 28 connected matters to pharmaceuticals company were ultra vires. His impressive list of clients is matched only by the scope and diversity of the legal challenges he has taken on over the years. Whether it is large corporations in the energy, telecom, banking, or manufacturing sectors, or public sector enterprise, or any religious trust, Senior Advocate Pati's legal acumen has been a critical asset to all of them. Moreover, Senior Advocate D.V. Pati's contributions to the legal field have been instrumental in setting precedents and influencing key rulings that shape the legal landscape. His role in the courtroom has not only helped his clients, but has also contributed to the development of jurisprudence in various areas, particularly in income tax law and corporate law. Mr. Pati's contribution extend beyond his legal practice with involvement in public entities like Mahavir Mandir Trust, Gurudwara Committee, Christian Legal Society, and Muslim Personal Law Board. He has also been designated as a senior advocate by the Supreme Court of India. Today, we are privileged to hear from someone who has been deeply committed to the legal profession and to the success of his client. His work has impacted countless lives, businesses, and industries, and we are fortunate to have him here with us today. Please join me extending a warm welcome to Senior Advocate D.V. Pati sir.
Thank you, Sweta ma'am. Now, we would like to respectfully request our Honorable Justice, Mr. Justice Rajiv Ranjan Prasad ji, to felicitate our beloved Senior Advocate Divipati sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So nice of you, sir. Honorable dignitaries and the valuable participants, in line with the motto of our federation, it is a moment of immense pride and delight as we honor and felicitate our senior members who have completed 50 years of distinguished legal practice. Today, we recognize the invaluable contribution of Advocate Brijnandan Prasad Gupta ji, Advocate Tej Narayan Gami ji, Advocate Ram Swarup Agarwal ji. Let us all extend our heartful appreciation with a big round of applauses for their outstanding dedication and service to the legal fraternity. And commemorate this significant milestone, we now request our chief guest to kindly felicitate them. We invite Advocate Brijnandan Prasad ji, Advocate Navneet Kumar ji, please help him to please escort to the dais. Navneet Kumar is son of Advocate Brijnandan Prasad Gupta ji. Thank you, sir. Thank you very much. We request Advocate Rajiv Kumar to receive the token of felicitation on behalf of his father, Advocate Tej Narayan Gami ji. As he is attending a family ceremony, he is not here. Please, Rajiv Kumar ji, please. Thank you, Rajiv. Thank you, sir. Thank you, my lord. Request Advocate Alok Swarup ji
to receive the token of felicitation on behalf of his father, Advocate Ram Swarup Agarwal ji, who is unable to attend due to his health problems. I want to share few words on behalf of my father. Thanks a lot to AIFTP and BITBA for recognizing and honoring all our seniors. Not only about my dad, but it's all about all seniors, our mentors, through whom we always learned a lot and we are still learning. Gold is gold basically. They are just enriching us with their knowledge and experiences, and we should follow their learnings. We should learn about their sacrifices and dedication for their professions, and we should also follow the same path from which they faced their life throughout the life. So, on behalf of my dad, he has conveyed his affectionate love and blessing to all of you, and all the best, all the day. Thank you very much. Thank you, Alok ji. Now invite on the dais a little girl, Tanistha, the daughter of Advocate Gyaneshwar Prasad, to present memento and felicitate our esteemed National Vice President, Vivek Agrawal ji. Please, Tanistha, come. Thank you, thank you, Tanistha. He is a very, yes, he is a very good dancer, sir. Earlier in this conference in 2022, the Bihar Chamber of has performed very Bharatanatyam he has performed. Yes, sir. Now call on the dais Advocate Alok Kumar and Advocate Akhlaq Ahmed to offer memento and felicitate our zone chairman, Advocate Shantanu Chaudhary. Alok is not present, then Rakesh and Ganeshwar Prasad, Gyanendra Priyadarshi. We now call on the dais Chartered Accountant Gopal Prasad Tulsianji to offer memento and felicitate our conference chairman, Advocate T.V. Gupta, sir. We now call on the dais Advocate Komal Raj and Advocate Vikas Kumar to offer memento and felicitate our convener, Advocate
I request Advocate Sunil Saraf ji and Vijay Kumar Gupta ji, please come on the dais and felicitate our Zone Secretary, Chartered Accountant Sudeep Pani ji. Now we request our convener, Advocate Jagdish Kumar ji, to felicitate our Bihar Income Tax Bar Association Secretary, Advocate Kamlesh Kumar Saha ji, and Treasurer, Advocate Narendra Prasad ji, and the Executive Rakesh Kumar ji. Sir, please come on the dais. Early, sir. Please. Kuhari, sir, we are going late, sir. We request our Zone Chairman, Advocate Santanu Chaudhary ji, to felicitate our AIFTP office bearers. So we request to Vice Chairman Ajay Kumar ji, Rohit Poddar ji, Devashish Mandal ji, Joint Secretary Navneet Kumar ji, and Chetan Patel ji to come on the dais. Please do hurry. Late, so request our National Vice President to felicitate our National Executive Sri Anand Kumar Pasari ji is not present. Pardos Patnaik ji, please come. His only delegates from Odisha. Where is Pardos Patnaik ji? Honorable dignitaries and most valued participants, there is one very important thing, sir, that we would like to share with you all, sir. It is our privilege and honor to extend a warm and heartful welcome to our esteemed guest speaker, Chartered Accountant Rajesh Mehta ji. He is from Indore, sir. He will be sharing his expert insight in the direct taxation, a topic of great relevance and importance to us all. Let us give him a big round of applauses. As we also welcome Central Zone Chairman Advocate Vijay Navlakha ji from Indore. We truly appreciate your dedication and commitment. Your journey to be with us today has been nothing short of extraordinary, sir. Starting from Indore, the night before yesterday, overnight layover in Delhi, and finally arriving here exclusively to educate us. Thank you, sir. We are thrilled and deeply grateful for your effort. Salute to you, sir.
Honorable dignitaries and valued participants, gives us immense pleasure to hear a few words from our esteemed zone chairman. May we invite Advocate Shantanu Chaudhary ji to share his kind word with us. Justice Rajiv Ranjan Prasad, Judge, Patna High Court. Dear members, delegates, my friends, colleagues, and seniors. It's a pleasure to welcome you at this one-day tax conference at Patna, jointly held by All India Federation of Tax Practitioners, Eastern Zone, and Bihar Income Tax Practitioners Association, Bar Association, Patna. These events hold special significance as this is the first tax conference held by the AIFTP Eastern Zone in this year. I take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to my immediate predecessor, Senior Advocate Sri Vivekananda Mohanty, who in his term as the Zonal Chairman has took the zonal activity to such a height that AIFTP Eastern Zone will be remembered as the best performing zone for years to come. At the same time, it would be a daunting task for me as the Zonal Chairman to emulate such great performance. However, I can assure you that I will not let you down in my effort. Hold the mantle of the AIFTP Eastern Zone high. Coming to this occasion, we'll have two technical sessions, one on direct tax and another on indirect tax. The first technical session will be on direct tax, and it would be cover important income tax proposals in Finance Bill 2025 and important issues, capital gains under Income Tax Act 1961. In this session, our guest speaker will be CA Sri Rajesh Mehta from Indore and Advocate Sri Rajesh Kumar Misra from Kolkata. The second technical session will be on indirect tax, and it would cover important GST proposals, Finance Bill 2025, waiver schemes under Section 128A of the GST Act 2017, and the amnesty scheme under Section 16(4) of the GST Act 2017. In this session, our guest speaker will be CA Ragini Goel from Guwahati. I hope we all will be enlightened by the deliberations of our esteemed speakers on the subject of the discussions. I once again express my heartfelt gratitude to our esteemed guests and delegates who, from their busy schedule, carved out time to grace this occasion. Thank you. Honorable dignitaries and the most valued participants, would like to invite on the dais NEC member Devesh Poddarji from Ranchi. I think he is present, yes. And Bhaskar Roy Sunhaji from Kolkata, the treasurer of East Zone. Please come on the dais. Too fast, sir. And we request our National Vice President Vivek Agrawal ji to felicitate them, sir.
Honorable dignitaries and valued participants, it gives us immense pleasure to hear a few words from our National Vice President, Sri Vivek Agrawal ji. May we now invite, sir, Sri Vivek Agrawal ji, please come on the dais, sir. Morning, everyone. Honorable Justice Shri Rajiv Ranjan Prasad ji, Judge Patna High Court, dignitaries on the dais and off the dais. I, on behalf of AIFTP Eastern Zone, warmly welcomes you to this one-day conference. AIFTP is a body, all India body, where all the advocates, chartered accountants, company secretaries, and cost accountants, including tax practitioners, are members. It was formed by esteemed lawyer Nani Palkiwala ji and Mehta ji. We are entering the 58th year next year, where C.A. Venkatramani ji will be taking over as a president. This is a body where knowledge sharing and fellowship is one of the main objectives of the Federation. I would request all the members who are not the members of the AIFTP, kindly join AIFTP so that the enrichment of knowledge can be there and fellowship among the members. PEs, ethics, education and excellence, the main motto of AIFTP, guides you to the profession to achieve great heights. Without taking much of your time today, as we are already running late, I will hand over the proceedings back to Ms. Smith so that we can proceed fast and start our technical session on time. Thank you. Thank you, sir. Now we invite Senior Advocate Divipati sir to introduce our distinguished chief guest, Honorable Mr. Justice Rajiv Ranjan Prasad ji, Judge Patna High Court. What to you, sir? My dear brothers, sisters present here, I have been given a daunting task of introducing a sitting judge of the Honorable Patna High Court. I can tell you for sure that if you look at him, he's the same way in the court and same way in the house. I'll share with you the most important and vital aspect of his persona. That is his calm throughout, and he never loses his calm. He's quiet, and the lawyer is able to conduct and give an arm play in the joints, to argue to the extent he will hear the lawyer until he empties his stomach. I'll share it with you about the humble and the humility which I had experienced, though I know him for long. When I went to invite him, without thinking for a second, he consented to grace the occasion. I am personally grateful to his lordships for having accepted my invitation to this august gathering, and say a few words also, so that would be a beacon and a guiding force to you in future. I can share with you the experience about his humility. When I was continuing. When I went to invite him, he gladly accepted. But the other day in the evening, he called me up to say that he did not remember while giving his consent that there was a marriage in his family that is going on. And then he requested me rather to find an alternative. I told him on phone, sir, if I had to find an alternative in the High Court of Patna, then perhaps I would not have gone to you. I do not see any other alternative before me. And I tell you, his lordships did not answer. He says, I will talk to my family members and tell you about the future course of action tomorrow. And I tell you, I was waiting. I went with an invitation card, found that his court was standover, and he was not present. I am told he was not well. I did not attend the court for 2 days. Despite he told me today in the morning, just entering the Taj Hotel here to attend us,
that fortunately he got well and he was very keen not only to preside but also as a participant. I would request you that he is in his heart a student of law even today. And I can tell you what we do not read in the court while reading a judgment. He would say, kindly read this line of the judgment and this word in particular and offer an explanation. To introduce a judge to the lawyer is a very undaunting task. It's very difficult. You have to be present in the court to understand a judge. It is a very difficult moment. But then I have found judges frowning and getting angry over lawyers. But then when I found Justice Nariman in the Supreme Court, he was a sea of knowledge. He never lost his calm. I compare my honorable judge with the great legal luminary with Honorable Justice Nariman, who heard patiently to the smallest of the lawyer in the Supreme Court. The calm and the persona of justice is the greatest asset to him and the greatest asset for the bar. He has contributed immensely with interpretations in the law, and he has laid out certain distinctions in the earlier judgments and also held them as per in curiam. And this recent judgment you should read. We were discussing in the morning about the judgment, that how a distinction was made to a division bench judgment presided by Honorable the Chief Justice, and which did not find favor with Honorable Justice Prasad, who presided over the court in a different judgment and held it as per in curiam. Sir, a great round of applause for the learned judge, and a humble judge, a calm judge, and who is a mentor to us all in all coming days. I thank you, sir, for having accepted the invitation. On behalf of my person and also on behalf of the All India Federation of Tax Practitioners, we are immensely grateful for your presence, your gracious presence in the audience today. Thank you very much, sir, for having accepted our invitation. Thank you, sir. So now I would like to request, sir, our chief guest to felicitate our guest speaker and former Secretary General, Chartered Accountant Rajesh Mehta, sir. Please come on the dais, sir. So nice of you, sir. Thank you, sir. I would request another request to our chief guest, sir, to felicitate our West Central Zone Chairman, Bijon Alakha, sir. He is from the city of Mahakal, Ujjain. Yes, sir. Jai Mahakal. Come, sir. Please come on the dais. Thank you, sir. Honorable dignitaries and most valued participants, now it is our privilege and honor to invite our chief guest, Honorable Mr. Justice Rajiv Ranjan Prasad ji, Judge Patna High Court, to share his kind words with us at this esteemed conference. Over to you, sir.
morning, all the dignitaries on the dais and off the dais. I feel extremely honored and privileged to be a part of this Patna Tax Conference 2020. I am told that Patna chapter of Taxation Bar Association is organizing this conference every year. Though for the first time, Patna zone has been able to arrange it at Patna. Mr. Pati was telling me that this is the first occasion that Patna zone has been able to do it at Patna. It's a great occasion for all of us. See, my experience at the bar mostly remained around the commercial litigations. I had an opportunity to become a chartered accountant and practice taxation. I'll tell you, after doing my BCom, I went Delhi and joined one chartered accountant firm, Prakash and Prakash, at Tilak Marg. So the senior partner Prakash ji told me, Rajiv, you learn income tax. And so he used to take me to the clients with him. One day what happened, that I was doing some accounting work and the account was not getting reconciled. So it took about 3 hours, I could not speak. At 1 o'clock, one of the staff said, Rajiv, are roti khale bhai. So then I found that it was 3 hours that I have not spoken. And so I was finding difficult to open my mouth. So this is the true experience I am telling you, how I left this. So for 3 hours, when I was not able to speak and then I was not able to open my mouth, I had to do like this. That day I thought that am I pursuing a correct profession? Is it suited to my personality? Because I wanted to speak. Right from my school and college days, I was involving in debates and everything. So I thought that no, perhaps this is not meant for me. I went to Institute of Chartered Accountants also for few months. And by that time, I got my admission in Delhi University. In the that time, for the students from Bihar, there was one course which was making us equivalent to become honors from Delhi University. So I joined that and I told, sir, please allow me to pursue my studies further. Bole theek hai jao. So I pursued my studies there after in Hansraj College, and thereafter I went to SRCC and Delhi School of Economics, and from there I joined Campus Law Center. So this was the journey I pursued during my studies, and I missed the opportunity to become a chartered accountant. But now, but coming from this commerce background, you know, I have no difficulty in understanding the taxation. So when I joined the practice, my area of practice was mostly in company side, company matters, arbitration matters. So I was getting some cases of taxation also. I was appearing for Steel Authority of India, doing some cases in Commercial Taxes Tribunal. I got one guru also here. Mr. Jain Sahai is no more. And DV Gupta Sahab will say, all the times we were meeting in the tribunal, sales tax tribunal here and then. And had occasion to argue tax reference in High Court and then file some tax reference cases of TRF in Jharkhand High Court also.
So, but not, I didn't get much client in the taxation. I pursued my profession in the company side only. Now, all that I will say that I'm not an expert in taxation. But what I believe as a judge is that even if I am not an expert, with the assistance from senior lawyers who are the domain experts, a judge can always improve and render good judgments. Mr. Pati, I'll tell you one thing. You are talking about my humbleness. I am what I have learned from my childhood. I'll tell you that I am born of a lawyer. And right from my childhood, I have seen the lawyer, how my father was working as a lawyer, how hard he was working, and how he was telling, inspiring all the times me to work hard and improve upon your performance. And a lawyer, I believe, he always keeps on learning. If you are a true lawyer, you always keep on learning and learning. My father is also a senior advocate. I know what a good lawyer is. I'll tell you even today sometimes on certain questions of law, I can discuss and find out solution of that problem. So my rating to a senior advocate is something else. My respect for the advocate's paternity itself is different and will be different from others. Because I have seen it right from my childhood, what advocacy is. Therefore, say nothing. You said, by facilitating you will be a news item. Yes, it should be a news item. It should be a news item because if a judge is facilitating a senior lawyer, how it can be said to be something which is unusual? A judge is also a part of the same fraternity. Only for some time the role has changed. After leaving this job, I may again fall in the same line. I may become an advocate. And so, it's nothing wrong in that. As a judge also, sometimes I find that when a young lawyer comes in the courtroom, he has not developed the points which are available to him. Is it not my duty as a judge tell him that, see, this is the point which is available to you, to take this point? I used to do it. I inspired the young advocates that, see, you have brought this judgment of 2018. There is a recent judgment of the Honorable Supreme Court on the same topic in which all these judgments, case laws have been reviewed. And this is the judgment, you take note of, go through it. And if you want to make some submissions, please make it. Because I'll incorporate this judgment in my judgment. Therefore, I am informing you, I sometime will inform even the other side that this is the judgment against you. I am giving you an opportunity, go through it. Want to say something against it or want to distinguish this judgment? Please let me know, because this judgment will be cited against you in my judgment. So this is how I conduct myself as a judge. And so far as hearing is concerned, I believe that a judge should never stop a lawyer from arguing. This is my belief. Because if a lawyer has come prepared and he is arguing well, giving you food for your thoughts,
He is only assisting you in rendering judgments, writing good judgments. Your quality of judgment will improve if you hear him peacefully. If you are in hurry, then that principle will come. If, justice will be correct and your judgments will be seen as if it half-hearted and certain questions of law, certain judgments, certain judicial pronouncements have not been taken care of. So a judge should hear the lawyer. This is what I believe, and I follow that. Now, coming to the today's discourse. See, there are various principles which guide a government's tax policy. Every country has its goal to be achieved through tax policy. Chanakya said, and I quote, "King must collect tax like honey bee, enough to sustain but not too much to destroy," unquote. Kautilya in his Arthashastra lays down guiding principles of taxation and warned against destroying tax base, as he was of the view that the taxation should not put a hindrance in a spontaneous growth of the productive base of the country. Now coming to some direct and indirect proposals in the Finance Bill 2025, all that I would say at this stage is that the domain experts on the subject and the two domain experts, the chartered accountants, Rajesh ji, and have arrived from Indore. So I am sure that they will discuss and their discourse will of immense benefit this August gathering. A little bit which I have understood is that this time the personal tax proposal is in limelight. The government has proposed a new tax regime in which individuals estimated to be 10 millions earning up to rupees 12 lakhs except capital gain annually will be exempted from paying income tax. It is said that this measure is designed to reduce the tax burden on the middle income earners, thereby boosting their purchasing power and stimulating economic growth. Two house properties owned by individuals can be considered unoccupied for any region, and the annual value for such properties be nil. Exemptions have been given to non-residents from equity shares and units in IFSC engaged in sheep leasing business. Now, the budget provides for establishment of Center for Excellence in Artificial Intelligence. A deep tech fund has been announced with a government contribution of INR 100 billion, with the objective of strengthening India's startup ecosystem. And it has been proposed that the 8 years time limit for carry forward and setup of the losses of an amalgamating company after amalgamation shall begin from the year immediately succeeding the year in which loss was originally incurred. The GST amnesty scheme under Section 128 Capital A of CGST Act applies for the financial year 2017-18, 2019-20. It applies to non-fraudulent cases assessed under Section 73 of the CGST Act 2017. It waives interest under Section 50, penalty, or both. The GST Council has recommended changes to Section 16, subsection 4 of the CGST Act, including a retrospective amendment
allowing taxpayers to claim input tax credit on invoices on debit note for the financial year 2017-18, 2020-2021, GSTR 3B return filed by November 30. This House may also delve upon this. I am giving a food for your thought. I think I have to discuss it. May also delve upon the retrospective amendment in the GST domain, which, according to some experts, seems to have been brought to overcome the judgment of the Honorable Supreme Court in Safari Retreats case by denying input tax credit for the construction of immovable property used for further supply of services. So these are briefly, I have noticed that these are the proposals which require a discussion, and I am quite hopeful that in the next technical sessions which are going to be held, participants should be immensely benefited by delving into all these issues, discussing and then exchanging their views here. With this, I would stop, give way to the beginning of the technical sessions. At the end, I must say that All India Federation of Tax Practitioners and Bihar Income Tax Bar Association have collaboration done a great job by organizing this meet. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you for your kind word of wisdom, sir. Another request, sir, to our distinguished chief guest to please felicitate the two great personality. One, the current president of Bihar Chamber of Commerce and Industry, Subhas Patwari ji, and another, our senior chartered accountant, P.K. Agarwal ji. Please come on the dais to felicitate. Sir, please come on the dais. Neeraj Kumar Naik ji, Akhlaq Ahmed ji, please escort, sir. Please. Sir, P.K. Agarwal, Chartered Accountant, sir, our senior, is advisor of this conference, sir. Thank you, sir. We now invite Advocate Ashish Prasad ji to kindly come on the dais and deliver the formal vote of thanks. Please, Ashish Prasad ji. For the inaugural session of Patna Tax Conference 2025, which has been organized by the AFT jointly with Bihar Income Tax Bar Association.
At the outset, I would like to express my profound gratitude to Justice Rajiv Ranjan Prasad, Judge Patna High Court, for, for sparing his valuable time to address the August gathering and for highlighting the issues that we need to deliberate on during the conference. Honorable Justice has enlightened the need for adopting multidisciplinary approach to succeed in profession. Along with, I would also like to express our gratitude to Senior Advocate Sri D.V. Pati, who have made much contribution for organizing this. I would also like to express our sense of obligations to Dr. Ashok Saraf. Fortunately, has not come. Our past president AFTP for his kind guidance for his events, and also helping us in the strengthening of our federation. We are also extremely grateful to our advocate, senior advocate Sri A.K. Rastogi, Sri C.A. E.K. Agrawal, past president Bihar Chamber of Commerce and Industries, and C.A. Suman Naik for their constant and meticulous guidance and in making the conference happen at Patna, Bihar, and also inspiring us to host its. Sir, we mainly work on behalf of our business, commodities and industries, and we are very much thankful to Sri Subhas Patwari, President, Bihar Chamber of Commerce and Industries, for sparing his time to encourage us. Sir, we convey our sincere thanks to the conference chairman, Advocate D.V. Pati, sir. This event should not have been possible without his constant guidance and help. I take this opportunity to extend our gratitude to the distinguished panel of speakers, C.A. Rajesh Mehta, sir, former Secretary General AIFTP, Advocate Rajesh Kumar Misra, Kolkata, and C.A. Ragini Goel, Guwahati, delegates from all over India, distinguished participants, and learned guests for participating at the events. I would be failing in my duty if I don't convey my thanks to the print and electronics media for the efforts of they are taking for coverage of the events and for highlighting the conference. Lastly, I thank you all the members of the organizing committee and all my friends who have been involved in the particular such limited particular with such a limited time frame. Without their cooperation and full support, this conference would not have been possible. I would also like to give my gratitude to Indian Oil Corporation, who have made such a high and huge contributions in this conference. Thank you all once again, and we look forward to an extremely productive next two sessions on income tax and GST. Thank you, Ashish, for extending vote of thanks. Even after extending vote of thanks, there is still one item left on the agenda, and you can guess very easily. Anybody's guess? This is a time to facilitate the person who has taken a lot of pains in organizing this tax conference at Patna, none other than Advocate Smith Saurav. I would request our chief guest, Honorable Justice Rajiv Ranjan Prasad ji, to kindly facilitate him, and his honor is honor of all of us. Thank you, sir. Thank you once again, Smith ji, for your all efforts. Thank you, sir. So nice of you, sir. No, I give back to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
My honor, sir. Now we kindly request all the dignitaries on the dais and off the dais to please stand for our national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Delegates and participants, the next technical session will start not late. It's going to be start in continuity, and in between you may have your tea break and coffee break. And after tea break and short tea break and coffee break, we will start first technical session. Thank you, sir.
Hello, hello. Please, delegates, please take your seat. Please take your seat. The first technical session going to be start. टैब क्या हो गया? Advocate Alok Swarup ji, please send delegates in the hall. Members, delegates, participants, please take the seats. The first technical session going to be start shortly. Advocate Neeraj Kumar Naik ji, may I call to come on the dais? Ganeswar Prasad ji, please escort our senior advocate Ajay Kumar Rastogi ji to come. Alok Kumar, Rakesh ji, Ganeswar ji, Alok ji, Vikas. Vikas. Delegates, take your seat. Hello, hello. Hello, hello. Our senior advisor, senior advocate Ajay Kumar Rastogi ji. Yeah.
Please delegates, please take a seat, have a seat. The first technical session going to start shortly. Our working committee, Vikas ji, send the delegates from outside to inside. Say them. The first technical is going to start shortly. Neeraj Kumar Naik ji, send delegates from outside to inside. Gyaneshwar Prasad ji. A very good morning to all of you. Again, sir. The most valued participants and dignitaries of the dais now. We now invite Senior Advocate Ajay Kumar Rastogi ji to kindly come on the dais and express condolences on the passing of our beloved senior most advocate, late Sudhir Kumar Narayan ji. Sir, please come, sir. Please. We have to start the session, but before that, friends, we are gathered here, pay obituary to a remarkable figure in the legal profession, because many of you may not be remembering or may not be knowing, Gaurav, to just display his photograph on the screen. Friends and colleagues, we have gathered here to pay obituary to a remarkable figure in legal profession, particularly the direct tax laws, Shri Sudhir Kumar Narayan, advocate who left us for heavenly abode on 9th of June 2024. 9th of June 2024. Friends, Mr. Narayan was born on 10th of August 1943. The family of legal doyen of tax bar, late Vishnu Dev Narayan advocate. Mr. Narayan graduated from Patna Science College and after completing his law from Magad University in the year 1966, he joined the chamber of his illustrious father, late Vishnu Dev Narayan. Mr. Narayan's tireless dedication, ethical standards, and sharp intellect quickly gained him respect amongst the taxpayers and tax bar throughout the state of Bihar and across the country. The understanding of complex income tax laws was exemplary, and he used to guide juniors and colleagues with immense patience. Many of you may not be knowing because it's a generation which has come after him, and I had witnessed him assisting Mr. Dinesh Vyas. I don't know how many of you heard the name of Mr. Dinesh Vyas, the senior advocate, and he was the person who has devised the book of Kanga and Palkiwala. After the death of late Palkiwala, Dr. Vyas was the person who has revised that book, Dr. Dinesh Vyas. So, Sudhir Bhaiya, as we used to popularly call him, Sudhir Narayan Sahab, he used to assist him in the income tax appellate tribunal. I have seen him from my own eyes for the income tax appellate tribunal, assisting Dr. Vyas in a very able manner in the cases relating Tata group of matters. Tata group of matter, earlier because Jharkhand and Bihar was one and the same state, and Tata's jurisdiction was in Bihar. Therefore, he used to come, Dr. Vyas used to come, and Sudhir Bhaiya used to assist him. Very ably, he used to assist him all through
in Tata Group of cases. Now, I must inform you that he, along with his seniors, late Kashinath Jain, senior advocate, late Mr. Lakshminarayan Rastogi, senior advocate, and Mr. Vishwanath Nayak were the founders of Bihar Income Tax Bar Association way back in the year 1992 or something like that, or maybe much before that. During his tenure as General Secretary and President of Bihar Income Tax Bar Association, a number of conferences, seminar, and legal study program were successfully organized. He was dedicated to the values of Rashtriya Swayam Sevak Sangh, very closely attached, very closely working with Rashtriya Swayam Sevak Sangh all through his career, and many of you were also not knowing until have looked upon him as our guide and source of inspiration all through. Friends, thus, on behalf of Bihar Income Tax Bar Association and All India Federation of Tax Practitioners, I offer my condolences to the family members, his brother Dr. Ranbir Kumar Narayan and his son Saurabh. Sharad Narayan is present here, and pray for the departed soul. And I may request all of you that let us stand for 1 minute in respect of the departed soul. The time starts now. Over. Sir, for the condolences of late Narayan ji, we now invite Advocate Shweta Kumari, Advocate Komal Raj, and Master of Ceremony, Advocate Alok Swarup ji, come on the dais and take charge of the proceedings for this first technical session. Over to you, ma'am, and over to you, Alok ji. Thank you, Samit. We are starting the first technical session. First of all, I would like to say, Jai Bihar. And how is the Josh? How is the Josh? Hi? Okay, that's great. Yeah. A very good morning to all of you. It's an absolute privilege for me to be the MOC of this first technical session. Myself, Advocate Alok Swarup from Patna, Bihar,
and I am a member of All India Federation of Tax Practitioners and BIDBA, Patna. Our today's chief guest, Honorable Justice Rajiv Ranjan Prasad ji, Patna High Court, as he is not here at present. Our today's guest of honor, an eminent senior advocate, Dr. Ashok Saraf ji from Guwahati, past president AIFTP. All respected advisors, chairmen, conveners, organizing committee members of today's conference, our seniors, mentors, colleagues, delegates from all over India, and all other distinguished guests present here. It's our immense pleasure to extend a hearty welcome to each one of you present here at this holy land of Bihar and at this Patna Tax Conference 2025, jointly organized by AIFTP and BIDBA Patna. Well, ladies and gentlemen, we are absolutely thrilled to witness such enthusiastic participation and a highly learned audience gathered here to deepen their knowledge on taxation, especially on our two most fascinating topics of this first technical session, especially the most key one will be important income tax proposals in Finance Bill 2025, recently presented before the Parliament by our Honorable Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman ji, on 1st February 2025. And our second topic will be again the very salient issue on capital gain under the Income Tax Act 1961. Friends, both the themes of today's first technical session have their own values and profound impacts in the field of direct taxation. And we must acknowledge this fact. Along with GST, the direct taxes are also one of the main sources of revenue for government and for stimulating the growth of Indian economy. So now, ladies and gentlemen, without wasting much time on enlightening the various aspects associated with these themes, I am directly coming to introduce here about today's guest speakers and session chairman of the first technical session, who will sparkle the discussion and will enrich us with their new ideas, thoughts, and visions on today's topic. So now I would like to request Advocate Sweta Kumari and Advocate Komal Raj to come over here and introduce our today's session chairman and our guest speakers. Over to Sweta and Komal. Friends, we are absolutely honored and fortunate to have with us today an incredible lineup of distinguished speakers and experts who all are noted figures and have made meaningful contributions in the field of direct taxation and will bring here their invaluable expertise and insights that will indeed make our exploration of the seminar topic a fruitful and enriching experience. Thus, it is with the utmost privilege that I would like to request and welcome on the dais our session chairman, Senior CA Deepankar Sarkar sir from Patna. With our guest speaker, CA Rajesh Mehta sir from Indore, along with Advocate Rajesh Kumar Mishra sir from Kolkata, to start with our first technical session of today's seminar on Finance Bill and Capital Gain under Income Tax Act 1961. Now, I'll request Advocate Komal Raj to take over from here. A very warm welcome to our respected delegates, colleagues, and distinguished guests with brilliant mind. I am Advocate Komal Raj from Patna, specialized in income tax law. I'm here with Advocate Shweta to brief intro about some of the expertise and achievement of our session chairman and guest speaker before they enriches us with new ideas, thoughts, and visions on today's sessions.
It is my absolute honor to introduce to our esteemed session chairman CA Dipankar Sarkar. He is a true pillar of expertise in the field of tax, accounting and law. He is primarily trained in accounts and audit and accounts, and he has a distinct privilege of being involved in finalizing all India balance sheet of some of the most prominent institute in the country. This includes several major national banks like Punjab National Bank, Indian Overseas Bank, Union Bank of India, other public companies like NTPC, SAIL, as well as multiple state public sector undertakings. His extensive tax and successful assessment has left indelible remark on many prestigious organizations like Bihar Education Project Council, Bihar School Examination Board, Beltron, and Raj Bal Sanrakshat Summit in Bihar. We are fortunate to have him here with us. Leadership, experience, and passion for the profession will undoubtedly provide us with invaluable insights today. So now I request Advocate Shweta to give a brief intro of our prominent first guest speaker, CA Rajesh Mehta, followed by second guest speaker, Advocate Rajesh Kumar Mishra. It is my privilege to introduce our guest speaker, CA Rajesh Mehta, sir, a highly accomplished and respected professional who has made significant contributions to the field of tax practice over the past 3 years. A practicing chartered accountant from Indore who has established himself as a prominent figure in the tax community. With over 30 years of experience in the profession, he had served in various key roles. His expertise in direct taxation had made him a renowned speaker across India on diverse topics. He has addressed professional bodies, including ICAI branches, tax bar associations, AIFTP, and online platforms, sharing his insights and knowledge with the wider tax community. His early academic achievements belong awarded by the ex-Chief Minister of Rajasthan, Shri Haridev Joshi, and Governor Shri O.P. Mehta for his rank in the Rajasthan Higher Secondary Board examination in 1985. Throughout his career, he has held several significant positions within AIFTP, including Chairman and Secretary of the Central Zone, contributing to the organization's growth and success. So please join me in welcoming this distinguished professional, a dedicated advocate for tax practitioners and a true leader in the field of direct taxation. Thank you. I'm handing over to Advocate Komal to introduce our second speaker, Advocate Rajesh Mehta, sir. My pleasures again to distinguished and respected members of legal and tax community, Advocate Rajesh Kumar Mishra. Practicing advocate in the Calcutta High and Income Tax Appellate Tribunal, hailing from Darbhanga, Bihar, Mishra has established himself as a lead tax law with over 10 years of experience. Advocate Mishra completed education at Calcutta University and has since established himself as a writer of Mishra's and Associates Central Court. For the year, he gained expertise in both direct and indirect matter, particular focus on GST after its implementation. Advocate Mishra is an active member of several tax bar associations, where he serves as an executive committee member. He regularly presents clients in revenue matter before the High Court of Calcutta and ITAT Kolkata bench. Additionally, he is frequent speaker of conference and seminar on district and on direct and indirect tax across various cities. Now, I request our session chairman, CA Dipankar Sarkar sir, to enlighten our brilliant audience with the first technical session. Welcome you all.
A chartered accountant almost time practicing account, balance sheet, a balance sheet review, a proper for taxation. So we chartered accountants at many times attempt further from the department. However, as far as practice, active practice, advocate ahead, of course, many are also practicing high court, but reliance is generally when it comes to kids. This gathering, one that I have never been before, because I have been printing seminars, etc. I see first major conference that is being Patna. So better matters. I will not encroach upon their I'll speak. Go ahead. Just a few words. As 12 lakhs nil taxation, the country by storm, and other than that has the papers. All the highlights have been tax. 12 lakhs from tax. However, there's much more, and I believe first speaker budget will lighten up matters. 12 lakhs is almost everyone. Good morning, ladies and gentlemen. Prabhatam. I heartily welcome all of you present here as a delegate, dignitary, as our mentor, guardians, and my co-speaker here, Rajesh Mehta sir, Dipankar sir. Today, I express my heartfelt gratitude to the AFTP and Bihar Income Tax Bar Association provide me such an opportunity to speak before yourself and enlighten upon the budget seminar, budget proposals. And especially, I also thankful the All India Vice President, who is the part of this August conference, Sir Vivek Agrawal ji. He is also believe thinking and his vision is so different, and he also tells that why we are not producing from the AFTP speaker from our dice and our region. That's why his keeping vision is always thankful and salute. I am saluting his vision that he keeping always think about each and every members of the federations, keep them upward and to move for the federation and to keep works and good things in the federations. These are the things. And being a son of this soil, I am feeling so proud to speak here. And I am going to the for introduction of the budget proposal. I say one word, that is the my soil. So I have expressed my words that Jai Bihar,
बोल के ही मैं अपना बात शुरू करूंगा। जय पटना जय बिहार, हमारी बिहार की जो पहचान है। और उसके बाद इस बार तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया है, तो वी आर द टैक्स प्रोफेशनल, वी आर सिटिंग हियर एवरी टाइम क्रिटिसाइजिंग हर that we have not done these things, we have not done these things, not fair for this. But on the standing of the soil of Patna, we can't say this time, because they have not doing the budget so far good for the like Bihar, Makhana board, greenfield airports, and the expansion of the Patna airport and food technology park. There are so many things for the Bihar. So on the standing upon the soil of Bihar, we cannot criticize the budget as far as now. Now we come into the proposals, 6 of the proposals by the Finance Act. Before going to the deep discussions upon the proposals of the Finance Act 2025, I would like to remind you that there are 2 things, the prolonged 2 demands have been not fulfilled by our Finance Minister. These are the very, मैंने ये कहने को बोले आप जैसे कि बहुत ही एक कठिन जो माने ड्रैकोनियन अप्रोच है फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो था, दी सेक्शन 115 BBE. You know about the section 115 BBE? This section has been introduced at the time of the notebandi. So this section has the draconian approach. This tax rate is every officers. This section, objectives of this section, the introduction of this section for a time being. So but it has been enlarged to the till now, and it has been continued to till now, and every officers, whatever they have made the additions, they followed these sections, they invoke the provisions of section 68, 69A to D, and charge the income tax upon the additions by leading the provisions according to 60% tax, 25% of penalty, overall 77.75% of the taxation. This is the huge amount of tax have been in every cases, so many cases they have brought the additions, all additions under the purview of the additions under section 115 BBBE. So this is the time being introduction of this section to safeguard the safeguard the interest of the time being on that of the when the notebandi has been going on. But notebandi is over, everything is over, the assessment is over. Why you would kept to continue this section? And the another one is the section 43BH. You know 43BH, introduction by the Finance Act 2023. This one section is also very harassing sections for the businessmen or always the taxpayers. To make an arrangement for the payment, the government now come into our shop and our businesses within the business premises and told me that you have to make a payment within 45 days. Section 43B deals with the actual payment basis of payment allowed. What is the section 43B? Deals with the actual payment basis. So they have introduced a section 43B subclause H in the finance through this Finance Bill 2023, and they have expressed that if you are not made the payment within 45 days, then this payment should be not allowed as expenditure. And our fellow chartered accountants have been sitting there. They have disallowed this portion part of payment because you are not made within the 45 days, and it should be added with your income computation. But it shall be subsequently allowed when you have to make the payment. So these 2 things, these 2 portions and 2 issues must be addressed by the finance minister in this finance budget. But unfortunately, we have nothing yet in section 115 BBE and 43BH. This is the 2 major issues we have dealt with. So these issues are not touched with the finance bill. Now we come with the tax proposal. Personal income tax have been increased from 7 lakh to 12 lakh, as you know, everyone. So a tax rebate of 25,000 gone to the 60,000. But when your income, suppose your income have been charged to 12 lakh 10,000. Suppose your income to gone to the 12 lakh 10,000, 12 lakh 20,000, 12 lakh 25,000. Then what's your position? So 7 lakh 042, and the tax slabs have been
year the finance minister made the tax slabs by the rationalizations of the figure 4, 0 to 4, 0%, 4 to 8, 5%, 8 to 12, 10%, 12 to 16, 15%, 16 to 20, 20%, 20 to 24. If you get anyone 20 to 24 slab, you have to get earlier. 20 to 24, this is the new slab. This is the new slab introduced by the Finance Bill 2025. So, at more than 24 lakhs, you have charged at the rate of 30%. But what is the position when we have our income of any client of our any professions and any persons have been income is increased by the 12 lakh? Then what's our positions? This is the very big questions. So, then what do you have to do? Anybody? When our income is more than 12 lakhs, then what do you have to do? No, what do you have to get? Any benefit get from this finance bill? Have you knowledge? What do you have get? Marginal relief. Yes, sir. Marginal relief we will get. But marginal relief, what much, how amount you have to get? Yes. So, marginal relief will be provided in the case of the income where income is up to 12,75,000. When your income is gone to the 12,75,001, your marginal relief is over. Suppose if your income is 12,10,000, suppose your income is 12,10,000, your tax without marginal relief is according to the new slab for the financial year 2025-26 and the assessment year 26-27, 61,500. But tax actually come on the figure 10,000. 12 lakh up to 12 lakh, this is the already exempted. So 10,000 should be taxable. So what is the tax of the 10,000? 10,000. So when we go at 10,000, so 10,000 rupees. So in case of 12 lakh 50,000, 60,000, 50,000. In case of 12 lakh 70,000, 75,000 and 70,000. In case of 12 lakh 75,000, 71,250. So in case of first scenario, 12 lakh 10,000, you have only required to pay rupees 10,000. This is the marginal relief, and it is deals under the section 87A rebate. So kindly noted it. In case of your income has come to at the rupees at around 12 lakh 10,000, then you get marginal relief up to the tax payment 12 lakh 75,000. So in case of 12 lakh 50,000, the tax actually comes 60,500, but tax actually liable to pay after marginal relief only is 50,000. In case of 12 lakh 70,000, 70,500, but actually liable to pay 70,000. So this is the tax actually paid after the marginal relief. So if your income is 12 lakh 75,000, you don't worry about that. Get some marginal relief. After 12 lakh 75,000, you can't get any relief from the budget proposals. What have the Madam Nirmala Sitharaman ji has presented the budget. But one thing, you have to go with the income tax slab. What are the persons mostly benefited? When the income is brought up to this to say 12 lakh, it is totally exempted. So suppose you are a tax practitioner, you are the tax advocates. How can you utilize these sections? How can utilize this for the benefit of your clients, your business clients, your taxpayers? How? Anybody has? How? How it has been more utilized? Being as a professional, being as a businessman, how can you have to utilize it? So, sir, section 44 AD, 44 ADA, 44 AD, 44 ADA, you are supposed to own the income 1 crore 50 lakhs. 6% or 8% of the 1 crore 50 lakhs is the 12 lakhs. It is the big benefit for the sections under section 144 AD. Those who are opting the business under section 144 AD. And now we come into the parts of our professionals. If we are professionals,
Under 44 AD is 50%. That's so if you have an advocate, you are a chartered accountant, if you have an income up to 24 lakhs, you have no liability. You have no liability up to the income of the 24 lakhs. So this is the big relief, but I have noticed because the 12 lakhs, the income slabs have been actually totally at around 6.87 crores returns have been filed last year. Out of that, 4.92 crores have been filed under the range of the 1 to 12 lakhs. And the government get here the figures that is the forgone the money 1.4 lakh crores. But actually government is not gone forgone the 1.4 lakh crores. The government is forgone only 25 lakhs of crores. Is my intention, because up to the 12 lakh ceiling, there are so many persons, so many taxpayers who filed their returns. They have only income up to, they have filed nil returns, maximum of a majority, they have no any income, they file their returns. So this is the part of our tax rates, and in the old regime, there is no change. There is no change in the old regime, whatever the ceiling tax brackets, 2,50,000 as it is, what are the deduction you have to get, that is as it is, nothing changes old regime, because old regime is, after the budget 2025, we are feel that the old regime is gone into the ventilator. And it is completely maybe abolished in the, when the budget, income tax bill have been introduced in the, on Monday, likely to be produced on Monday, tabled on Monday. So, there is a chance of our advocates, we have dealing with the advocates and chartered accountant, utilize these situations and according to plan our clients' balance sheets, clients' profiles, client computations, give them maximum benefit by using this tax slab. It's our motto and it's our EA. And you also get a deduction of rupees 75,000 of the salaried employee. This deduction is the, in the old regime is the only 50,000 and it had been carried on. And in the new regime, earlier year 50,000 and this year has been gone to 75,000. If you are a salaried people, according to the new provisions of the income tax, what is the presented in the parliament, up to 12,75,000, you have not required to pay any single tax of rupees. This is the first thing. And thereafter, if you come with the portions of the new regime, under new regime, you have to must go lot of your deductions, sacrifice your deductions. So after sacrificing your deduction, just you make a computation, and the income tax tabulation in the income tax portal, you have got a comparative taxation under the new regime, under the old regime. So you may choose according to your benefits. So this has been till open this year. So you accordingly change, because the 3.82 crores returns have been filed under the old time in the last 20 years. So major portions of the taxpayers have been under the old. So they have tested their benefits under the on the portal. They are benefited, they have opted. So this was the reason the finance minister very make attractive new tax slabs that you will get. And this 87 rebate, who is entitled for the 87 rebate? Any of them you have taken? Who is entitled for this 87 rebate? Who are entitled? Only individuals, not in case of HUF, artificial and body of individuals. So kept in mind, the tax slab rate for the everyone, all, the individual, HUF, artificial body of persons, for the, all these categories. But rebate is only allowed in case of individual. So kindly kept in the mind. And so, and another provisions have been changed by this Finance Act is the under the new regime, there is one more difficult thing we are facing at the time of filing of the TCS returns and TDS returns. Under which sections we have getting problems? Section
under section 194Q and 206C. This is the very big problem for us when we are going with the section 206 and C and 194Q, because they collided with each other. And we have to decide which section is better for our client, which section is better for our client. Somebody else, I am deducting TDS. Why you are deducting TCS? So this is the conflict between the buyer and supplier. The government try to reduce this, omit this section 206C with the effect from the 1/4/2025. Not only that, a litigation portion, prosecution portion, the prosecutions when you have failed to deposit the TCS amount. In earlier budget, the finance minister has already abolished the clause of the prosecution. If you deposit your TDS and file your returns, then prosecution will not be initiated. Accordingly, under section 206C, section is omitted from 1/4/2025, and the finance ministry has suggested that if you have made the payment of the TCS and filed the statement, there is no case of any prosecution lying on upon you. But still in mind, if you not made the payment, in earlier provision in TDS is also there on, if you not made the payment and if you not filed the statement, in that case the earlier provisions will be applied to you. You must face the prosecution. So this is the second better thing for us, and TDS 194Q is just going as it is on. What are the TDS benefits what you have to get, going to according to your choice, and there is no choice. 194Q you have the only choice. You have the more than 10 crores of turnover in the last preceding year, and transaction, the threshold limit is the 50 lakh aggregate limit. So if you cross your limits and if you are falling under the category, then you don't go with the 206C, go with the 194Q and deduct the TDS and deposit in the account and file your TDS return. This is sufficient, and 206 has been kept as closed. Now, in case of house property, there is very so much dispute about that, not a clarity on the same, that in earlier provisions of the budget, that prior to Bill 2025, the annual value of self-occupied property was taken as nil if it is occupied by the owner for his own residence or cannot reside therein due to reason of business, profession and employment. So this is also a litigated issue. How can you prove I am where due to profession, due to business, due to there? So government tried to remove this by business, profession and employment, and government has substituted a word in the 23(2) that due to any reason. Whatever the reason, to have occupied a true self-house property, notional value of rent cannot be charged upon you. Suppose that our accepted annual rent is 2,40,000. You all get a standard deduction 24B, 72,000 on upon 2,40,000, and net taxable income is 1,60,000, and application tax rate is 30%. Then tax on the deemed rent. आप रहो चाहे मत रहो, आप खाओ चाहे मत खाओ, हमको पैसा दे दो, ये आप घर का यूज कर रहे हो, ये उनका कहना था। तो अब उसके कहने के अनुसार वो बोले कि भैया पैसा आप तो देना पड़ेगा, आपको नहीं देंगे तो हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो माने कुछ ना करके भी पैसा को व्यय करना, माने we have nothing to do and pay the taxes on the notional rent. The government tried to abolish these things, and so accordingly, if your notional rent is 2,40,000, that you will entitled to get the benefit of rupees 1,416. You have nothing required to pay as a notional rent, as provided in the 23(2) subclause 2, because in earlier section they have, and it has been introduced in the financial year previous year 2024. It is effective from 2024-5 and assessment year 2025-6. And another one is the belated return. This issue is the very interesting for all of us, because the government come forward with the
extending the time limit, the updated return and belated return. We are in the saying the belated return. The facility is belated updated return has been defined under section 139 subclause 8A in the Income Tax Act 1961. So if you go with the belated return, the government come forward with a new parameters of the belated return. Suppose in previous erstwhile regime and in the erstwhile sections before amendment of the 2025 budget, the 24 months of the end of the relevant assessment year is proposed to extend 48 months. So 4 years have been provided. आपको 4 साल मिलेगी. आप 4 साल में अपना जो कुछ भी आपने गलत किया है तो आप इसको ठीक कर सकते हो. सपोज टू से दैट 2024-5 ये हमारा जो असेसमेंट ईयर अभी खत्म हुआ है, तो अगर इसका हम लोग अपडेट रिटर्न करते हैं या कोई नॉन फाइलर अपना रिटर्न फाइल करने से चूक गया है, वट एवर दे एनी फाइलर्स हैव बीन by mistakenly miss his opportunity to file the returns, then what in this case of scenario? Up to 31st March 2025, you have required to pay 25% because this is the first year. This is the first year of your updated return. And come to the next up to 2 years. That means 31st March 2026. In the second year, you have required to pay 50%. And in the third year, if your assessment year is falling under the 2024 and 25, third year is lying on 31st March 2027, and you have to require pay 60%. And in the fourth year, if you have missed the opportunity up to 3 years, you have think that I have updated my return and filed my income tax return, and you have not received any notice under section 148A. Provided that you have received any notice under section 148, because in case of notice under section 148A, the time period has been redefined in the earlier budget. 3 years normal cases from the end of the relevant assessment year, and in case of specific cases where the escape income is more than 50 lakhs, then in that cases you have to reopen, the department may reopen your file up to 5 years. So in case of 2000 assessment year 2024 and 2025, you have to get 3 years 3 months. You have to get up to time limit is 31st March 2028, 3 years, because first year is 25-26, second year is 26-27. So up to 31st March 2028, if you filed your return, miss your return for the assessment year 2020 and 25, then income tax department may reopen your file up to 31st March 2028. The government align this reopening with the bill updated return figures and periods. That's why they have suggested, they have proposed in the Finance Bill 2025 that 31st March 2028 up to you have to file your updated return, but have to pay lot of more taxes, say at a rate of 17% on the additional tax, whatever you have to pay, tax defined under according to your computation. But on this computation, just to arrive at ₹1, and upon ₹1, you have to more pay additional ₹70%, then you are eligible to file the updated return. So this is the scenario, and you also pay the interest. You are not exempted from return.
लेकर के रिफंड देना। तो जिनका खाली रिफंड का केस बनता है वो बिलेटेड रिफंड में आएगा क्यों भाई? प्रेयर करो, वहां पर जाके अपना यूटिलाइज करो, भाई जाके बोलो रिफंड दे दो, तो कम से कम वहां रिफंड मिल जाएगा। यू आर इंटाइटल्ड टू गेट रिफंड, बट go with the updated return. Case of refund, you have nothing to get, you have get zero. And search is going on. Search and seizures have been under section 132 going upon premises and your business, you are not entitled to file the updated. So indeed हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न को भी नहीं फॉलो करें, सपोज a person miss their opportunity to file the updated return. My personal view, I am not going to ask all you all follow my personal view that if you miss your opportunity to file your income tax return, Income Tax Department for the assessment year 2024, Income Tax Department has empowered to open your file up to 31st March 2020. So in the earlier portion, if you opted the belated return and updated ITR, have paid to 60%, 70%, whatever the bracket you have to fall under the according to your period of filing. So you wait for the 148 notice. If you wait for the 148 notice and you cannot reply anything in the 148 notice, just you have to ignore these notices, and you got the 148 notice. When you got the 148 notice, you have eligible to file a return under section 148, and you utilize this opportunity and you declare all these things what you have not declared here and pay the interests. So you got the escape from this related updated return category. If you suppose that if any income, you have to assume that my file will be reopened if I had not filed the return or the updated return. So you wait for the 148 notice. 148 notice has been served to you electronically. You have received the notice. You have ignored the notices. Just to get the 148 notice, you have eligible to file the return under section 148. And you file the return under section 148, whatever possesses with you, whatever the declare want to declare in the return, and this will get benefited for you. And in that case, you have only charged according to the tax rates, slabs, and interest. So this may be bypass you have to maybe taken. But in case you have to try to buy peace of mind and not going to the litigated into the matter, then you have to choose related return. And thereafter a major change have been done in the penalty section by Finance Bill 2025. A penalty can be imposed by assessing officer. Earlier, the assessing officer are not entitled to make and impose the penalty without the prior approval of the joint commissioner and the commissioner, whatever the case may be. And in the specific cases, if your penalty amount is rupees 10,000 or 20,000, whatever the case under section 274, 271B, 271C, 271D, they have been defined. If these are your sections under this purview, then you assessing officer can impose the penalty without prior approval of the joint commissioner, but not in the case of your specific penalty is more than 10,000 and 20,000. And these provisions have been done by the Finance Act 2025. Now, an important thing, suppose your assessment has been done, the assessing officer has passed the assessment order, and you feel that what are the additions have been made in this assessment order are eligible, are genuine additions, and we are not get any benefit from anywhere. In that cases, it's my suggestions to you. You have make an immunity under section 270A, the provisions given in the Income Tax Act 1961. And the time limit for this provision is only for 1 month after receiving the order. The 270A of the Income Tax 1961 has empowered you to make to accept your additions, to make the payment and make an application before the assessing authority that I am
agreed with your additions, and I might not make any appeal in future on that point, even undertaking on this later, and thereafter he may not impose a single paisa penalty upon you. So the time limit for this 270 AAA AA is only for 1 month. The government has come to the exercise by Finance Bill 2025. Time limit for 1 month is extended to 3 months. So we all are benefited in case of lower additions, lower margins for avoiding the penalty. So it is the good amendment. I think it is the good amendment to getting an opportunity in the hand of the small taxpayers. They have got utilized all these things. They have made the payment and got from immunity from the penalty. And time limit for imposing the penalty has been rationalized by the Finance Bill 2025. If you suppose the earlier provisions, you receive the order, from the date of receiving the order, the assessing officer must pass the penalty order within the 6 months after the expiry of the end of your order in which the order has been passed. When the appellate order has been received, there is a separate time limitation is there. When the ITAT order has been received, separate time limitation is there on. When the High Court order has been received, the separate time limitation is there on. The government make equality on all these things. They come forward with and in order to imposing a penalty under chapter 21 shall not pass after the expiry of 6 months from the end of the quarter in which the connected proceeding are completed. End of the quarter. Suppose your order has been passed in the month of March. The assessing officer can empower to pass the penalty order end of the quarter, that means January, February, March, April, May, June, July after 6th up to December. So this is the parodies given by the Finance Act 2025. In case of your penalty, your penalty order, the assessing officer, in any case, whatever the case in the High Court matters, ITAT matters, and the appellate proceedings. In all cases, this parity has been maintained. In the different time limit of the penalty has been abolished by the Finance Act 2025. And the clarification regarding the stay, basically in the such cases and other cases also, the clarity is not given, different clarity, the word has been used as per the existing provision, explanation under section 1 and section 153 of Income Tax 1961, following periods shall be excluded in computation of time limit in respective section. Time limit during the assessment proceeding is stayed on order by injunction or any court. The government made a clarity on this issue because these draftings have make more litigated this. That's why government come with the easiest and simplified language. The period of commencing the date on which the stay of assessment proceeding was granted by an order of any court ending on the date on which certified copy of the order vacating the stay is received by the jurisdictional principal commissioner. So here is the government clearly define the period. जितना दिन भाई आपने केस किया, हाई कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट में ले गए, कहीं भी जाइए झूलते रहिए, जिस दिन ले गए और जिस दिन वैकेट हुआ वो पीरियड हमारा काउंटिंग के बाहर हो जाएगा. पहले क्या था, इसमें क्लैरिटी नहीं था, इस वर्ड को लेके काफी लिटिगेशन हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया कि भाई आप इसको मान के चलिए. अब था टाइम लिमिटेशन ऑफ सीज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट. सपोज आपके यहाँ सर्च हुआ, सर्वे हुआ, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज करके रख लिया जाता था अंडर सेक्शन 153 में, 132 में. तो इसके अंदर में उन्होंने क्या किया, बिफोर फाइनेंस बिल 2005, AO could retain the seized books of account and other documents for 30 days from the date of assessment or reassessment or recomputation order. And by the Finance Bill 2025, our Finance Minister has also simplified these provisions. Section 138(2)(8) of the Income Tax Act has been amended to provide the assessing officer can retain seized books of account and other documents for a period of 1 month from end of the quarter. इस पर शायद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को एंड ऑफ द क्वार्टर वर्ड बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने हर प्रोविजंस में इसको यूज किया, एंड ऑफ द क्वार्टर. एंड ऑफ द क्वार्टर में जो होगा तो होगा,
तो यहाँ पर इन्होंने किया कि एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट एंड रिकम्प्यूटेशन ऑर्डर हैज बीन मेड। तो यहाँ भी इन्होंने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया है कि जो आपको कब तक क्या करना है, नहीं करना है। और सबसे जो बड़ी इशू थी हम लोग को ट्रस्ट के अंदर में 12A के अंदर में, उसको भी गवर्नमेंट ने रेशनलाइज्ड किया है कि भाई आप मान लीजिए आपने एग्जाम्शन के लिए एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन में कोई त्रुटि रह गई, कोई भूल रह गई भाई, तो उसको रिजेक्शन को मोटो कमिश्नर उसको ऑर्डर चला के रिजेक्ट कर देते थे। तो खैर वहाँ से आपको छुटकारा मिल गया है कि उसको रिजेक्ट नहीं माना जाएगा। उसको शोकॉज आपको जैसे अपने नॉर्मली शोकॉज होता है, अगर कहीं कोई हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन लगाते हैं, किसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, वेरी फाइल द एप्लीकेशंस। In that cases, if you have find any deficiency, then you clear your defects, you repair your defects, and correct the application. So this benefits under for making the trust application have been made. और दूसरा जो हमारे छोटे छोटे NGO हैं जिनका 5 करोड़ तक का ग्रॉस रिसिट्स है, उनके लिए भी एक अच्छा बजट में वेलकम स्टेप है। दिस इज द वेलकम स्टेप गिवन बाय द टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर दैट कि अगर मान लीजिए आपका 5 करोड़ से नीचे का ग्रॉस रिसिट है तो आप 5 बजाय के साल के बजाय आप 10 साल के बाद जाकर रिन्यूअल कराएं। माने रिन्यूअल ऑफ द एग्जाम्शन सर्टिफिकेट फॉर द 5 years as per the existing act, and the after the Finance Act 2025 it has been extended for 10 years in case of small NGOs and trusts. तो के बाद में सबसे बड़ा जो अभी हुआ है ये स्टार्टअप्स को भी, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं नए नए जो लगाते हैं, उनके भी टाइम पीरियड में एक्सटेंशन हुआ है इस बजट के अंदर में। तो उनको मिल जाएगा भाई, अभी तक 1/4/2030 तक उनको मिल जाएगा। और सबसे बड़ा जो चीज़ हुआ इस बजट के अंदर में, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो TDS को रेशनलाइज्ड इन्होंने किया है in case of threshold limit and in case of rate also. अब बताइए, हम तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखते थे, सुनते थे, वो लोग बताते थे कि भाई 30,000 का हमारा लिमिट है 194J में, तो भैया इसको दूसरा पेमेंट कर दो, इस पर हम दूसरा पेमेंट कर देते। एक प्रोफेशनल भी पेमेंट लेने में ही चकता था भाई कि 30,000 के ऊपर लेंगे, पेमेंट करेंगे तो हमको TDS काटना होगा। तो ये 194J जो अपने प्रोफेशनल, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो एडवोकेट्स यहाँ बैठे हैं, तो गवर्नमेंट ने भाई रिलीफ दिया कि 50,000 कर लीजिए, 50,000 तक मत TDS कटवाइएगा, तो उसके ऊपर काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं, काटेंगे। तो ये इसके अंदर में था। और जो TDS का जो मेन रेशनलाइजेशन किया गया है 194 में, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में, तो आप जानते थे कि जब फेयर बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी होता था तो सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 था, उसको उन्होंने बढ़ा के सीधा 1 लाख रुपया कर दिया है। और जो हमारे इन केस ऑफ अदर, जैसे आपके हमारे केसेस में 40,000 था, उन्होंने उसको 50,000 कर दिया है। और ऑल अदर केसेस में जो 5,000 था, जिसपे अपने जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लिए हैं, लिमिटेड कंपनी से लिए, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह मेंटेन करते हैं इन केसेस में जो अपना 5,000 का लिमिट था, तो उन्होंने 10,000 बढ़ा के 5,000 यहाँ भी बढ़ा दिया। तो रेशनलाइजेशन वर्ड अगर यूज किया है, कुछ ना कुछ तो सबको देना पड़ेगा ना, तो हम इनको अगर नहीं देंगे प्राइवेट वाले को तो फिर कैसे होगा। उन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ 5 से 10,000 रुपया कर दिया। लेकिन ये बिग बेनिफिट टू दी सीनियर सिटीजन्स, इफ दे have a interest up to ₹1 lakh, they have nothing required to file section 15G and 15H forms, because you have filed wrong declaration under section 15G in the form of 15G and 15H. The income tax department has liable to make a prosecution to you. That's why it is a big relief for the senior citizen not filing the incorrect declaration. Because as I think, हम जानते हैं कि बहुत सारे आदमी जिनका इनकम है 4 लाख 5 लाख बेसिक एग्जाम्शन लिमिट के ऊपर, वो भी 15G और H के लगाते हैं बैंकों में, भाई हमारा TDS मत काटिएगा सर, हमारा इनकम बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो इस निजात से पाने के लिए बढ़िया स्टेप है, ये वेलकम स्टेप है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा से इसको कवर किया है। और डिविडेंड में 5 से 10,000 रुपया किया है इंडिविजुअल स्टेक होल्डर के लिए, और म्यूचुअल फंड में भी 5 से 10,000 किया है। और विनिंग लॉटरी के अंदर में पहले वर्ड था कि भाई एग्रीगेट, भाई आपकी लॉटरी लग गई, खुशकिस्मत इंसान है, 30% दीजिए 115 BB। भैया गवर्नमेंट ने एक तो सुविधा कर दिया कि नहीं, यू हैव टू नो, वी हैव नॉट यूज द वर्ड एग्रीगेट, वी हैव यूज द वर्ड सिंगल ट्रांजेक्शन।
If single transaction is more than 10,000 rupees, then I have deduct the tax under 194 BB. इंश्योरेंस जो एजेंट होते हैं भाई, तो LIC वगैरह करते हैं, LIC वगैरह करते हैं, उनको 194D में 15,000 का ही बेनिफिट था. They have only got the benefit of 15,000. They have benefit has been enlarged to 20 money increased to 20,000 rupees. कमीशन ब्रोकरेज अपने देते थे भाई, अपना ये काम कर दिए, वो काम कर दिए भाई, वो 194H, तो TDS डिडक्शन था तो 15,000 रुपये होने से ज्यादा TDS काटना पड़ता था अपने को. बट नाउ आफ्टर द फाइनेंस एक्ट 2025, only we have required to deduct the TDS upon 20,000 of rupees if you exceed the amount of 20,000. Rent. This is the very serious issue is this budget. Rent. If you have received the rent rupees 2,40,000, if you paying the rent 2,40,000, you have required to deduct the TDS. Now the friends, you are all the chartered accountants and the advocates. You can say, what is the limit fixed in this budget? 6 lakhs. What's 50,000 per month? This is the basic thing. This is the basic difference here. In aggregating rupees 6 lakhs and 50,000 and part their month. What is the written in the finance? So this is the very kept your mind clear in that part. That suppose you have let out your property to anyone, and monthly rent will be 50,000 and more, and you let out your property in the month of March, you have required to deduct the TDS on the for the month of March, according to the provisions. So it is very clear about that. In case of advance payment, when you make the payment, the provisions have been clear laid down there. When you make the payment, and date of credit and date of payment, what the payment was, the provisions given in the TDS, date of payment and date of credit, whichever is earlier. Yes, absolutely. In case of advance, you have liable to deduct the TDS. When you make the payment, you are liable to make the payment the TDS. In case of advance payment, you are not eligible to not deduct the TDS because it is the comes currently for the future months. Keep in mind, you have just keep in mind the 50,000 part of month or full month, when it should be exceeded, you are liable to deduct the TDS. But who will deduct the TDS? Everyone is not required to deduct the TDS. The TDS will be deducted only by the individuals. Those accounts are audited, partnership firms, incorporates. So this is kept in this mind because it is the very interesting fact that now so many professionals make a blunder on that part because they have total aggregate में 6 लाख बोला जी, हम क्यों काटेंगे TDS आपका? तो kept in mind, इसको मत करिएगा, इस गलती को दोहराइएगा मत. ये गलती को दोहराएंगे तो आपके पेनल्टी को तो जो लगेगा क्लाइंट को लगेगा, आपको भी इंटरेस्ट लगेगा सर, आपकी फीस भी कम हो सकती है. और उन्होंने TCS के अंदर में एक ही अमेंडमेंट किया है. There is only one amendment in the case of TCS. टिम्बर के ऊपर उन्होंने 2% कर दिया है. TCS का जो रेट था उस रेट को घटा के उन्होंने 2% किया है लाइव टिम्बर के ऊपर के अंदर में, और तो फॉरेस्ट के ऊपर से है. और सबसे और एक चीज हुआ है कि कैरी फॉरवर्ड लॉस ये ज्यादा इफेक्टिव होता था अपने इन केस ऑफ एमलगेशन मर्जर. अगर किसी कंपनी के साथ में अगर हो रही है, इन केस ऑफ एमलगेशन और मर्जर हुई है, तो भाई ये कह रहे थे कि जिस ईयर में आपका प्रीसीडिंग ईयर में मर्जर एमलगेशन हुआ था वहां से हम पकड़ेंगे आपका कैरी फॉरवर्ड को. बट by the Finance Act 2025, the government has simplified all these issues and make a clear cut version thereon. In order to bring clarity and parity in the provisions of section 72 of the Act, it is proposed to amend section 72A, 72AA of the Act to provide any loss forming part of carry forward for not more than 8 assessment year immediately succeeding the assessment year in which such loss was first computed in the original proceeding. जो उसका जो
इंटैक्ट पोजीशंस था उसको मिल गया कि भाई आपका मर्जर हुआ, एमलगेशन हुआ, whatever may be changes done in your constitution, I don't bothered about that. आपको जो लॉस जिस साल में मिला है, according to that you will be benefited. So this has been simplified in this budget also. And एक अपना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लोग जब टीसीएस का स्टेटमेंट लगा रहे थे तो भाई हम लोग को बोला था कि अब तुम दूसरे के घर में भी झांक के आओ कि अगला 2 साल का रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया तो 20% लगाएंगे, नहीं लगाओगे तो हम पकड़ के तुमको 20% का नोटिस भेजेंगे. तो it is a very hardship for the business and the taxpayers and also with upon the professional. It is very difficult to find out who is the paying 2 years returns or not because it is out of purview of our business. हम लोग कैसे देख पाएंगे कि भाई उनका 2 साल आप उनसे मंगाओ तभी कंफर्म हो पाएंगे कि उनका रिटर्न लगा है कि नहीं लगा है. नहीं लगा है तो in last year in October 2024 so many notices have been issued by the income tax department for the non-filer in case of the 206AB. So this is the big threat and big questions and big harassment for the taxpayer as well as the professional. The government comes with the removing this litigation and accordingly to address the issue, section 206AB को उन्होंने यहाँ से बोला कि भैया आपको इनको विदा कर दो, नहीं विदा करेंगे तो कहीं हम लोग को पब्लिक विदा कर देगी, तो भैया ये गलत हो रहा है, उसको हटाना जरूरी है. ये डेक्रोनियल अप्रोच है कि अब दूसरे के घर में हम झांक के देखें कि वो रिटर्न लगाया कि नहीं लगाया, इसके हिसाब से हम अपने एसएससी का भाग्य निर्धारण करेंगे, ऐसा नहीं होगा. तो गवर्नमेंट ये वेलकम स्टेप है, उन्होंने 206AB को हटा दिया. लेकिन यहाँ भी अटमोस्ट केयर रखना है कि भैया अगर नॉन फाइलर का जो है जो सेक्शन उसके अंदर में नॉन पेन वाले जो है उनका वही रहेगा. जो नॉन पेन है उनका उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया कि भाई उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. नॉन फाइलर का आपका चलेगा ही उस तरह से ही जैसा चल रहा था उस तरह से ही चलेगा. और बेसिकली जो अपने इस बजट से फील कर रहे हैं, जो हमारे our also co-speaker, learned co-speaker is the very renowned chartered accountant of his profession, Rajesh Mehta sir is there. He will enlighten you on the case of the capital gains and what are the other benefits and other amendments regarding the capital gain and international financial services centers. He is enlightened on this subject, and by this keeping this my word, with my crux of my knowledge, what I have achieved, what I have learned for reading materials and budget, I have enlightened this August gathering and hope we all enlightened with my knowledge. And if you have any questions, just to share me, I will answer you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your enlightening talk. You have considered the whole matters, whole proposals, precise manner and very clear manner. A big round of applauses for him. And now I will request Rajesh Mehta ji to start his day. Thank you. Our today's guest, Honorable Justice Rajiv Ranjan Prasad ji, and guest of honor, Advocate Ashok Saraf Sahab in Africa, and East Zone Chairman Sahab, Conference Chairman Ji, Parji, Pati Sahab, Parji, Alok Ashish Prasad ji, and all the chartered accountant, tax professionals. Today I have been given an opportunity to discuss the important issue, capital gain provisions under the Income Tax Act. So capital gain issues are always under litigation in the income tax. At many times there are thin lines. And as we have seen that
this budget, the very hot issue, the basic exemption limit of income tax has been raised from 3 lakh to 4 lakh, and up to 12 lakh income there is no tax due to VAT under A. Similarly, in the last budget was presented in July 2024, there was a great relief for long-term capital gain tax. It was reduced from 20% to the 12.5%. So no one imagined that we can get such a relief. What were the reasons for that? We can only assume that government thought that many of the persons are purchasing the immobile properties to get the rebate or exemption under section 54 and 54F only for tax saving. Even if they do not need the property, but to save the tax, they are purchasing the property and they are paying stamp duty there, and the properties are lying vacant. So they thought that if you are paying stamp duty there, pay same tax here, and you will be saved of 7.5%. And if you need that property, then only purchase. Otherwise, pay the tax and keep the money liquid with you. That will be utilized in the nation. That will be utilized in the business sector, manufacturing sector, or the any other investment. So I think they have reduced that tax. And for the equity, the tax has been raised from 10 to 12.5%. The equity, the market is on very high during last 4 years. So even if that has been raised, no one has objected and no one is getting any problem. But when this rate was reduced to 12.5%, even though many of the taxpayers objected that we want the indexation, why our indexation benefit has been done away. We want grandfathering. The grandfathering has been introduced in the year 2018 in case of equity oriented fund. Earlier they were equity shares and etc. Earlier it was exempted 100% under section 10 clause 38, and thereafter it was liable for tax at the rate of 10% under section 112A. So their grandfathering was allowed. Whatever fair market value in 2018, earlier that will remain exempted. In the same manner, the public wanted that we should grandfathering. If our tax liability less in the old regime, we took an advantage of. So when the budget was finalized, the July 2024, at the time of final budget, the two alternates were provided. That if any of the taxpayer find it beneficial by taking the index cost, then he can take the advantage of that portion. If his tax liability is higher under the old regime by adopting the indexation value, then he can opt for the 12.5%. So they have introduced that if tax liability in the erstwhile provision just before 23rd July 2024 higher, then it will be, the higher tax will be ignored. And in that budget, the period of holding for many other long-term investments, long-term asset has been reduced from 36 months to 24 months. So gold earlier was covered under 36 months, that has been reduced to 24 months. Immobile property was already reduced to 24 months. Then another one amendment was done with effect from assessment year 2024-25 regarding the home loan interest. However, I think many of us has not discussed that amendment during last 2 years, but that was very important amendment. In that section 48 clause 2, there was an amendment that if any of the person has taken benefit of interest under section 24 clause B, then such interest will not be treated as a cost of acquisition when you sell the property. So this is a disadvantageous provision. But in my opinion,
this is a advantageous provision, and this has clarified one thing, that if any of the interest paid on house property which has not been claimed as exemption under section 24 clause B, that you can capitalize, and whenever your client will sell the property, that indexation or that cost of improvement, cost of acquisition will be paid. Because if any of the person has self-occupied house property and he has opted for section 115 BSC, which is the default tax regime, under that system he is not allowed any home loan interest. So he is having to forego the amount he is paying when he sells the property. He is not allowed the cost of acquisition as a deduction. So from assessment year 2024-25, they have made it clear that if you have not utilized that under section 24 clause B, that will be treated as your cost of acquisition. And if you opt for indexation, you will be allowed indexation also. So how we will keep track of this? I would advise our tax professional that if you are having some of the clients whose of accounts are not audited, they are not having books of accounts because of section 44 AD or 44 AD or because of the salaried employee, I would advise that you should prepare the capital account and statement of affairs, so that you will keep track of the every year interest being paid by him or her, and at the time of sale of that property you can claim it as a cost of acquisition. So kindly keep in mind section 48 clause 2. Then when this 12.5% rate of long-term capital gain was introduced, many of our clients are making us call, sir, I have sold a property for rupees 1 crore and I am ready to pay 12.5% tax. So 12.5 lakh, 12 lakh 50,000 tax I am ready to pay. Even now clients are so much glad that they are not ready to reduce the cost of acquisition. But indexation is not allowed. First, cost of acquisition will be allowed. If the property has been acquired before 1st April 2001, then fair market value on 1st April 2001 will be treated as your cost of acquisition. And if any cost of improvement is there, that is also allowable as without indexation. And if you have received the property by way of gift or by way of will, that will also be if the period of holding by the previous owner is treated under section 49. So kindly keep this in mind also. Then in case of the section 50C, section 50C, a provision which was many problem to many of taxpayers. Say a farmer has sold his agricultural land. That is the urban agricultural land. The stamp duty value of the property is 5 crore and the actual transaction value is 3 crore. So the farmer had sold it for 3 crore. He has received a notice from department that you have undervalued, offered your value, you had to offer it for 5 crore as per section 50. Or a person, that farmer has purchased the another residential house for purpose of section 54F. He has invested whole 3 crore in the purchase of the residential house. So farmer told that from where I will get more 2 crore to invest in 54F. So I cannot pay tax on that 2 crore which I have not received, and I cannot invest the money which I have not received. So there are so many judgments because section 50C does not start with non-obstant clause. Section 50C starts with here the consideration received or accruing as a result of transfer. So section 50C does not say that notwithstanding anything contained in any other provision of this chapter. It does not say so. So it is not a non-obstant clause. Therefore, if any of the person has sold his mobile property, sold his rural agriculture, urban agricultural land, rural agricultural land is already 100% exempted. Urban agricultural land, or he has sold any plot, any property and invested that under section 50 or 54F, then section 50C will not be applicable. So there are so many judgments on this issue.
regarding the 50C, which tells that 54F, the landmark judgment was Gyanchand Batra, ITAT Jaipur judgment, and there was a judgment of Mr. Dhanvir Singh Gambhir, ITAT Indore bench also, in which it has been held that the whole of the sale consideration or the capital gain amount has been invested in purchase of the new property and nothing remains with, then you are not liable to be covered under section 50. And under section 50C also, if you have not purchased any other property, but your transaction value is, stamp duty value is not more than 10% than the transaction value, then excess of 10% between the transaction value and stamp duty value will be ignored. Say for example, you have sold the property for rupees 1 crore, you have received check of rupees 1 crore and stamp duty value is 1 crore 9 lakh. So 9 lakh will be ignored for the purpose of 50C because only 10% variation is allowable. If you have sold, stamp duty value is 1 crore 12 lakh, then 12 lakh will have to be considered for the purpose of 50C. You have not opted for 54F. Then leasehold property. I think in the Patna there will also be development authority. In our Indore there is Indore Development Authority. So they give properties on the lease. So they give properties on lease for residential or other commercial purposes for 30 years. So there were so many of the taxpayers told that if you have purchased a property on lease, so it is on lease, it is not my freehold property, so section 50C is not applicable to me. So there was a judgment of Honorable Bombay High Court, IT versus Greenfield Hotel and Estate. That judgment, they have told that section 50 is not applicable to the leasehold property. But in my opinion, even if the property is on lease, section 50C will come into, because if they are granting for 30 years, then it is like a freehold property. So there was a judgment of Rajasthan High Court, the case of Ramji Lal Meena versus ITO. That judgment, Honorable Rajasthan High Court had discussed the judgment of this Bombay High Court and have told that if we apply this judgment of Bombay High Court, then all leasehold property will come out of the section 50C. So they told that you have to see how this property has been reflected in the balance sheet. If it is reflected in the balance sheet as an asset, then you have to treat it as a freehold property. It is not a freehold property, but it will be covered under section 50. So in my opinion, the Rajasthan High Court judgment is correct. So in case of the leasehold property, we should always apply section 50C. Then in case of section 54, there was an amendment by the Finance Act 2019 that if any of the person purchases more than one residential house for the purpose of section 54, then earlier more than one house was not allowed to be purchased under section 54. If anyone has capital gain of rupees 3 crore and he wants to purchase 2 house property, so he will be allowed exemption only for one property under section 54. For another property he will not be allowed, and another property he cannot purchase within next 1 year. So they have made a amendment by the Finance Act 2009 that if any of the individual or HUF has capital gain of not more than 2 crore, he can purchase 2 properties at the same time. So he may purchase 2 property of 1 crore each. At the same time, he will be allowed exemption under section 54, but this is only once in a life. So say for example, after 4 years again he has capital gain of 2 crore, he wants to purchase again 2 properties. No, he only once in a life, say for the purpose of section 54. Then during assessment year 2024-25, one more amendment was made that capital gain exemption under section 54 will be allowed only up to 10 crore. Say, because any of the person having capital gain more than 10 crore for the purpose of section
or he is rich person. So if he has sold a property for rupees 70 crore, his capital gain is 30 crore. He has purchased another residential house for 30 crore. He will not pay any tax. So government thought that we want tax from rich people. So you can invest only 10 crore, or if you invest more than 10 crore, you will not be allowed exemption on excess amount. You will be allowed exemption up to 10 crore only for the purpose of section 54. And excess investment will have to be ignored. Then color of money. Color of money means anytime the assessment, our client come to us that he tell that, sir, I have sold a residential house, or I have sold an agricultural land, and I have kept that money in the fixed deposit. I will earn monthly interest from that. And we tell, he also wants exemption. So we tell him that if you will purchase any other residential house, then only you can get the exemption. He wants, no sir, I want regular interest, so I will not invest and I will take a home loan from the bank. Banker is ready to very cheaper rate for the home loan. So when we go to the assessing officer, he asks the color of money. He tells that the money you have received from sale of old property has been invested in the FDR, and you have invested by way of the new loan. So you will not be allowed exemption under F. But there are so many of the judgment which tells that color of money is not relevant. You can purchase any other residential house, residential property by way of taking a loan, or taking loan from your wife, loan from relative, or loan from anywhere. Intention of the law is only to purchase the property. So there is judgment of Kayasa Srinivas versus JCIT, Hyderabad Tribunal, Delhi Tribunal, Kapil Agrawal, and Hyderabad Tribunal, Gatpudi, and so many judgments are there. Then for the purpose of section 54 EC, as we all are aware that section 54 is available to everyone. Section 54 and 54F is available only to individual HUF, but 54 EC is available to every SSE, even a company or a partnership firm can also avail the 54. However, it is not much advantageous because only 5.5% I think interest is there, and 5 years lock-in is there. And earlier many of the persons used to purchase 50 lakh bond current year, 50 lakh bond next year. So that is not allowed. And for the purpose of 54 EC, 6 clear month is allowed. Say for example, your client has sold the immobile property in the month of February 2025. He can invest that money up to 31st August 2025. So it is not compulsory that he will have to invest in bond up to 5th August 2025. So 6 clear months are to be allowed. There is a judgment of the Kolkata ITAT, and some other judgment are also there on that issue. Kolkata Tribunal in case of Kartik Chandra Mandal, 2018 judgment is there. For the purpose of section 54F, as we all are aware that the new property can be purchased within 1 year before or 2 years after the transfer, or if new property is to be constructed, it has to be constructed within years from the date of transfer of the original asset. So for the purpose of purchase, before 1 year is allowed. For the purpose of purchase, after 2 years is also allowed. But for the purpose of construction, within 3 years from the date of sale is only allowed. So whenever our client go for the assessment, his case is taken up for scrutiny, assessing officer tell that for the purpose of purchase 1 year before, year after. For the purpose of construction, 3 years after. So assessee had started construction in the year 2021 and he had sold the property in the February 2025. So his construction got completed the year 2025 and he sold one property in December 2024. So assessing officer told that your construction should have started only after December 24 and you have started construction before 21. Since last 4 years you are doing construction. So last 4 year exemption you are availing.
case of purchase, we are allowing only 1 year. You are availing 21, and you had purchased the plot in the year 2019. For that, you are also claiming 54F. Will not be allowed. So only amount which you have invested after December 24 and between February 25 for 3 months, you have invested 10 lakh. Only 10 lakh will be allowed under section 54F. And during 4 years, you have invested 3 crore, that will not be allowed. Is it justified? Because can any person construct his house within a 3 months? Because when he is ready to sell his property, anyone has planned that I will sell that. So if he forever his life he wants to live his own house, he'll surely start construction before 2-3. If he has thought that I will never live in the rented house, he has started before, why he will not be allowed 54F exemption? So there are so many judgments. There is judgment of Gujarat High Court in case of Shantaben P. Gandhi. There is judgment of Allahabad High Court CIT versus H.K. Kapoor. Many judgments. Delhi High Court CIT versus Bharti Mishra. Those judgment is told that for the purpose of construction under the Income Tax Act, date of commencement of construction has not been restricted. For the purchase, date of purchase has been restricted to 1 year. Construction is not restricted. The date of completion is restricted, that it should be completed within a year from the date of sale. So even if you have started construction before 2, 3 years, 4 years, the cost of plot, cost of construction of earlier period will also be allowed to you. And under section 54F also there is an amendment that more than 10 crore investment will be ignored from the assessment year 2024-25. If you have invested more than 10 crore in the purchase of new property for the purpose of 54F, the excess amount will be ignored, so you will compulsorily be required to pay tax on that amount. If any of the construction could not be completed even within years, because after the date of sale construction could not be completed within, but intention was complete, then exemption cannot be denied, because he started to construct in the year 2005 and he could not complete it even up to 2030, but he had purchased the plot. The construction was going on during whole 3 years, but could not be completed due to many reasons, due to some court notice, due to many other legal reasons, due to shortage of fund or so whatsoever. So if intention is clear for construction of the house, so whatsoever amount has been invested within the year, that will be allowed for the purpose of section 54F or 54. There is judgment of Karnataka High Court in the case of CIT versus Sambandam Uday Kumar and Sardarmal Kothari, Madras High Court. Then new asset can be in the name of wife. If any of the person for the purpose of 54 and 54F wants to purchase property in the name of wife, even though he will be allowed that exemption, there is judgment of Punjab and Haryana High Court CIT versus Gurnam Singh and Madras High Court CIT versus P. Natarajan. Sir, because of shortage, I am not giving detailed citation of the judgments. So if you, I will share you my write-up, so you find those judgments there. Then capital gain account. Under the capital gain account, one thing is said that, however, that is beneficial to clients, that many times the bankers are issuing check to the account holder himself. But if any amount is lying in the capital gain account, the check can be issued out of the capital gain only to the material supplier, only to the contractor, or only to the person from whom we are purchasing the property. So no amount can be transferred to the ordinary saving account of the account holder. So banker must be aware, but no problem if the amount has been invested for the purpose of purchase of. Then another thing, say for example, any of the assessee was of the age of 90 and he had invested his amount of 10 crore in the capital gain account. He told that within 2 years I will purchase any other house or will construct a residential house. But suddenly at the age of 90, he was deceased. So whether his son or his wife is required to invest that amount in the purchase of property or in the construction of property? No.
there is a CBDT circular of 6 May 1996, in which circular CBDT has told that if any of the assessee paid capital gain account and he has deceased, in legal year are not required to comply the further condition of 54 or 55F. They are free to take this money and utilize for whatsoever purpose they have. Then for the purpose of section 111A, earlier capital gain, short-term capital gain tax was 50%, which has been 20%. Sir, I think within 10 minutes I will complete. So 20% has been raised short-term capital gain and rural agriculture land. Say for example, the municipal limit out of the municipal limit of Patna, 8 kilometer, because the population is more than 10 lakhs, so maximum 8 kilometer from the end of municipal limit of Patna. If any of the agricultural land is situated beyond 8 kilometer from the end of the municipal, that is the rural agricultural land. So if you sell any rural agricultural land, it is out of purview of the capital gain, out of purview of the capital asset. So even if you sell it less than stamp duty value, no liability for tax. Even if you purchase that rural agricultural land at less than stamp duty value, you will not be covered under section 56 subsection 2 clause 10. So no tax liability. And even if you purchase it within 1 year, because 24-month restriction is also not there, because whole of amount is exempted. So if you have sold purchased the property for 1 crore and within 12 months you sold it for 5 crore, whole of 4 crore is exempted because out of purview of the section 2 clause 14. Then another thing, the municipal limit of Patna has been widened. I think has been widened. In our Indore, the municipal limits has been widened. As and when the city grows, the municipal limit is by way of notification widened. So out of 8 kilometer, many of the farmer had agricultural land just at the 7 kilometer. Or say for example, just at the 9th kilometer. So that 8 kilometer has been widened and that 1 kilometer agricultural land has now become urban agricultural land. So he is at a disadvantage. Earlier his land was exempted, now he is liable to pay tax at the rate of 12.5%. So what to do? In the year the 2024 municipal limit has been widened. So farmers say, if I was aware, I could have sold it before in the year 2023 itself. So he is at a disadvantage. So there is a judgment of Punjab and Haryana High Court in the case of Sardar Hoshnak Singh. In that judgment, they have told that here also grandfathering will be allowed. So whatever was the fair market value on the date when the municipal limit notification, widening notification was issued, the fair market value on the date of notification will be treated as your cost of acquisition. Any gain arising before that period will be exempted. Any gain arising only after that widening notification only be liable for capital. Then forfeiture of advance money. From the assessment year 2015, you all are aware that if any of the amount has been forfeited towards sale of capital asset, then that is become taxable under section 56 subsection 2 clause 9. But if any of the person has forfeited any of the amount towards the sale of rural agricultural land, then it is out of purview of the tax. Say for example, you are owning an agricultural land beyond 8 kilometer from the municipal limit of Patna. At the 10th kilometer, you are having a land of rupees 10 crore. You had taken an advance of 2 crore, buyer did not come. So you have forfeited that 2 crore. So that crore is not liable for tax under section 56(9) because that is not a capital asset. So 56(9) is applicable only for the capital asset. So that is exempted. But that should not be used as a shortcut. Then another 2-3 important points I would like to discuss.
Section 50 depreciable asset, capital gain. Any of the industrialist is selling his immobile property, factory building. Earlier he was claiming depreciation and now he has sold it. So capital gain arises. Section 50 Section 50 says that any gain arising on sale of depreciable asset, which is a capital asset, that will be short-term capital gain forever. So that will not be eligible for Section 54F, or that will not be eligible for concessional rate of 12.5%. So there is a judgment of Honorable Guwahati High Court in the case of CIT versus Assam Petroleum. In that case, Guwahati High Court has told that even if asset is depreciable asset, it is covered under Section 50, but any of the capital gain arising on that will be of the character of the long-term capital. So that will be equal for, in my opinion, at the rate of 12.5%. Then there is another judgment of Bombay High Court CIT versus S Builder Private Limited. In that judgment also, they have told that deeming fiction of Section 50 does not state that deeming provision of Section 50. This section are not only restricted to Section 48 and 49, but also to other sections. So this section nowhere says that deeming fiction is applicable to other section also. So this is not applicable to other sections. So long-term capital gain rate will be allowed if it has been held for more than 24 months. But there is a judgment of Madras High Court. Madras High Court has told that the case of M. Raghavan, that indexation benefit will not be allowed. But in my opinion, indexation benefit also be allowed, but this all are subject to. So whenever we advise our client, always give him, bring to his knowledge all the restrictions that we may have to go to higher authorities, to the tribunal or to the High Court, then only it will be decided, because this is not clearly mentioned in the law. You can only interpret this. Compulsory acquisition of the immobile property. If any of the immobile property has been compulsorily acquired under the RFCT LAR Act, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition and Rehabilitation Resettlement Act, then any amount received from that is exempt from income tax. But this is nowhere mentioned in the Income Tax Act. And there is nowhere any circular notification regarding this. This is mentioned under Section 96 of RFCT LAR Act 2013. They had brought a circular that in case of compulsory acquisition under RFCT LAR Act, no TDS will be there only. They have told that no TDS. They have not mentioned that it will be exempt. So, but it is also an act of the government. So Section 96 of RFCT LAR Act tells that it will be out of purview of the income tax. So if compulsory acquisition is by way of RFCT LAR, then it will be exempted from income tax. That circular was issued in 25th October 2016, but they have only mentioned TDS will not be there. So they have not clearly mentioned there also the problem there. Then some people I would like more discuss. However, I think I am totally in time limit. 9 SS. Any of the, however, our educated clients are more aware, so no problem. But if any of the farmers sell the property, they accept the money in cash. Farmer think that we are out of purview of the income tax. Even, and if he is selling the rural agricultural land, he will accept the money in cash. But any of the person who has any income chargeable to tax, even if he is below the basic exemption limit of 4 lakh or 2.5 lakh, even though he cannot accept the money under Section 269 SS of 20,000 or more in cash for sale of the immobile property. So we must educate our client that if you are selling any immobile property, you cannot accept cash of 20,000 or more in cash.
So they should accept it by way of check compulsorily. Then in case of the capital gain accounts, if section says that capital gain account should be opened on or before due date of filing of the income tax return, that is 31st July 2025. Yeah. If any gain is there in February, you have to invest that money in capital gain account. You have to put money in capital gain account up to 31st July 2025. Or you are subject to audit then up to 31st October 2025. But many times assessee forget. So there are some judgments that tells that if assessee has forgotten and he has invested that money in purchase of house or construction of house, even beyond 139 due date, but within 139 subsection 4 due date, that is up to 31st December 2025, that will also be eligible for the purpose of capital gain exemption. Punjab and Haryana High Court in the case of CIT versus Jagriti Agrawal, and Karnataka High Court in the case of CIT versus K. Ramchandra Rao. One thing, for the purpose of section 54F, there is a condition that assessee should not own more than one residential house on the sale or on the date of sale of the property. So the assessee has 3 house property. In all the 3 house property, husband and wife have joint ownership. On a plain reading, he will not be allowed, but in my opinion, he will be allowed. Because there is a judgment of ITAT Mumbai in the case of Abdul Rahim Suleiman Ghaswala, 1st January 2024, that was the judgment. They told that there is the joint ownership, and section 54F says that he should not own more than one house. So this is the half house. So this is not house, more than one house. So this is not one house, this is half house. So he can own even 6 houses in the name of his brothers or his wife. So that will be allowed for the purpose of section 54F. But we should not use as a tax planning tool, because law may be changed anyway and High Court can. But this is, we can avail only when our client has done any mistake. We should not advise him. So sir, this was something about the capital gain. So thanks a lot to all of you for inviting me. Thank you. Thank you, sir. He well explained about all the aspects of capital gain of this first technical session. He enriched sites and with your experiences and with your all these explanations on the various aspects under the capital gain head. Big round of applause for sir. Now I will request Sir Dipankar Sarkar sir to share his few words on the note of final closure of this first technical. Act is such, however much you study, however much you think that you are an expert, a speaker can always throw more light on whatever you know. Capital gains as it is a complicated issue. And through amendments over years, it has been made more complicated. Sometimes without mentioning and sometimes in the name of simplification, but they have always turned out to be more complicated. Just told him, Rajeshji, that pointed out such small issues normally miss. Small issues that we normally miss, but are very important and can be beneficial to our clients. So thank you so much, Rajeshji, and both Rajeshji, dono Rajeshji hain. Because the budget also has, as I said, the highlights are just highlights. There was so much underneath and in layers. Everything has been brought out very well by the 2 speakers. Thank you very much.
So finally, we are coming to conclude our first technical, and we express our sincere gratitude and thank the eminent speakers and for their enlightening talk, for sharing their expertise, all of us with their immense knowledge and experiences. I would like to call will felicitate Dipankar Sarkar ji, Rajesh Gupta ji, Advocate, Kolkata. Over to you. I'd like to request Advocate Manju Jha Madam to come on the dais, felicitate our session chair, Dipankar Sarkar sir. Now, I would like to request Advocate Pradosh Patnaik from Orissa come on the dais to felicitate our guest speaker, Advocate Rajesh Mishra sir from Kolkata. Thank you. Well, finally, we have come to the first technical. I am also thankful to all the esteemed and delegates for your active participation, valuable contribution, knowledge exchange. And friends, now we will have a break, 5 minutes.
Hello, hello. Check. Hello. Vikas ji from Dhanbad. Go outside and say delegates to come in all. The second session going to start very short. Devashish Bandal ji, side and delegates. Again you go. This post lunch session. First, the second technical session is going to start shortly. Kumar Monuji, tally person, please come near the dais. Our sponsor tally software person in charge. Delegates, tally, our sponsor, friends, going to presentation for 10 minutes. Provide him 10 minutes to presentation. Please stay with us. Post Patnaik ji, only delegates from Odisha, Bhubaneswar, the dearest, dear friend. Are thrilled. We are excited, sir. With Poddar, sir, outside, come.
Now I would like to invite the tally person. The tally sponsor to this conference. Sponsor. Going to present his tally software. 10 minutes. Okay. Him. That is your. हेलो हेलो नमस्कार, मेरा नाम रोशन भंडारिया है। लास्ट 25 ईयर्स से हम लोग टैली के साथ एसोसिएटेड है। हमारी कंपनी का नाम शक्ति प्राइवेट लिमिटेड, तो लास्ट 25 साल से 5 स्टार पार्टनर, सेल्स एंड सोल्यूशन पार्टनर हम। आज टैली के बारे में आप लोग सब बहुत अच्छा तरीके से जानते हैं, लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे वो कैसे हम लोग और ईज कर सकते हैं अपने बिजनेस को। ये जो आज के में जो कंप्लाइंसेस है और जो कंप्लाइंसेस में जो चैलेंजेज है, उस चैलेंजेज को कैसे ईज कर सकते हैं। 5.1 में जो लेटेस्ट वर्जन है अभी का, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो हम लोग 15 से 20 मिनट में आप लोग अपडेट करेंगे। थोड़ा सा आप लोग इसको देखेंगे। इसके बाद में जब कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो एक आपको लिंक भी जाएगा जो ट्रेनिंग का होगा, जो आपके नीचे होंगे जिनको उन करने में चैलेंज आएगा, तो उसको हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग भी देंगे। ठीक है, तो आज हमारे साथ मिस्टर तबरेज हयात हैं, जो इस पूरे ट्रक के एक्सपर्ट हैं और ट्रेनर हैं। ठीक है, मैं हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल। जैसा सर ने बताया, तो बहुत कम टाइम होने के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कम टाइम में हमको ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताना है आप लोगों को। तो इसलिए हम लोग पूरे प्रोडक्ट की बात ना करके जो अभी लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आया है के बारे में सिर्फ बात करेंगे, और उसके बारे में सिर्फ स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी जो हमारा प्रोडक्ट है, जो लेटेस्ट जो टैली है आप लोग कर रहे होंगे या आपके क्लाइंट जो यूज कर रहे होंगे, वो है टैली 5.1। टैली 5.1 टैली प्राइम का लेटेस्ट रिलीज है। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जो पहले टैली में नहीं थी और अभी वो फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसके बारे में सिर्फ हम लोग बात करेंगे। प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसे हमारा बाहर में हेल्प डेस्क है, अगर टैली से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो आप वहां पर भी हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। के बाद तो सबसे पहला जो फीचर जिसकी डिमांड बहुत दिनों से थी, हम स्टार्ट उस फीचर से करते हैं, जो कि है एक्सेल इंपोर्ट। ये एक फीचर है ऐसा जिसके थ्रू हम लोग टैली में एक्सेल के थ्रू कोई भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा मतलब जो वाउचर्स एंट्री हम लोग अभी मैनुअल कर रहे हैं या जो लेजर्स मैनुअली क्रिएट करते हैं, उनको हम लोग ऑटोमेटिकली एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब एक्सेल में अगर वो डेटा मेरे पास है या क्लाइंट का डेटा मेरे पास एक्सेल में आया है, तो हम मैनुअल डेटा एंट्री ना करके उस एक्सेल वर्कबुक से, उस एक्सेल वर्कशीट से डेटा टैली में ला सकते हैं। तो हम एक छोटे से वीडियो के थ्रू ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे ये होता है। लाइव प्रोडक्ट हम नहीं दिखा रहे क्योंकि टाइम उतना नहीं है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, ये टैली ओपन हुआ हुआ है। अब यहाँ पे अभी यहाँ देखिए कोई भी लेजर नहीं है। ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी लेजर नहीं है, जो डिफॉल्ट लेजर है बस वही है, ना कोई स्टॉक आइटम है। इसी तरह का कोई भी मास्टर्स या कोई भी वाउचर यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमारे पास एक एक्सेल शीट है यहाँ पर, और उस एक्सेल शीट में मेरे पास सारा डेटा है। हमारे पास सारा डेटा है, मतलब स्टॉक आइटम है, लेजर है, ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, सब कुछ है। अब ये आप देखिए, अभी वो डेटा जो हमने दिखाया एकदम ब्लैंक था, उसमें किसी तरह का कोई लेजर नहीं था। और ये एक्सेल शीट विद इन अ क्लिक वो सारा डेटा यहाँ इस टैली के इस डेटा में हम लोग फर्स्ट जो दिखा रहे हैं वो मास्टर्स दिखा रहे हैं। तो मास्टर्स को इंपोर्ट करने का तरीका है ये। यहाँ पर हम लोग वो वर्कबुक सेलेक्ट किए, ये पूछता है कि क्या इंपोर्ट करना है, लेजर करना है, ग्रुप करना है, आइटम करना है, उसको सेलेक्ट किए। टैली में डिफॉल्ट टेम्पलेट्स दिया हुआ है, मतलब डिफॉल्ट एक्सेल शीट दिया हुआ है, जिस एक्सेल शीट में अगर आप डेटा पैटर्न में एंटर करके रखेंगे तो ये आसानी से जस्ट बस इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुल। अभी हमने यूनिट किया था, उसके बाद फिर से यूनिट को करने के बाद स्टॉक ग्रुप कर रहे हैं। स्टॉक ग्रुप को करने के बाद स्टॉक आइटम करेंगे। तो बस एक क्लिक पे ही वो सारा डेटा एक्सेल से इंपोर्ट होके हमारे यहाँ टैली में आ जाएगा। तो क्या आप देखिए, अभी ग्रुप में इंपोर्ट हो। इसी तरह से हम यहाँ पर फिर से मास्टर्स में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, सॉरी स्टॉक ग्रुप कर लिया, अभी स्टॉक आइटम करते हैं। स्टॉक आइटम किया। अभी आप जैसे ही स्टॉक आइटम पे एंटर मारेंगे, अगर 200, 300, 400 भी स्टॉक आइटम है हमारे पास, तो वो आसानी से विद इन अ क्लिक, विद इन अ मिनट यहाँ पे टैली में चला आएगा। इस तरह से अभी हम लोग लेजर भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करने से पहले एक बार आता है, सब देखने के बाद ये इंपोर्ट। आप यहाँ लिस्ट जब हम देखेंगे, आप देखिए लेजर्स में था वो यहाँ आ गया, और ये लेजर जो आएगा पूरे डिटेल के साथ आएगा। अगर हम वहाँ पूरा डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, जीएसटी नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम लोग एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया मास्टर्स। बाद क्या होता है, मास्टर्स के साथ साथ हम ट्रांजैक्शंस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन मेरा एक्सेल में है, मतलब मेरे पास ट्रांजैक्शन अभी टैली में नहीं है, एक्सेल में है, हम बहुत आसानी से जिस तरह से लेजर्स को इंपोर्ट किए, उसी तरह से हम यहाँ पर देखें वाउचर्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग डिफॉल्ट टेम्पलेट देते हैं। मतलब डिफॉल्ट टेम्पलेट मतलब एक एक्सेल शीट का पैटर्न देते हैं। एक्सेल शीट में अगर आप डेटा को अरेंज करके रखते हैं,
ये आसानी से इंपोर्ट कर लेता है। यही नहीं, अगर हमारे पास कोई अपना एक्सेल शीट है, हमने टेम्पलेट में नहीं रखा है, हमने कोई दूसरे सॉफ्टवेयर से जनरेट हुआ हुआ एक्सेल शीट है, तो भी हम लोग उसको मैपिंग करके यहाँ पे इंपोर्ट। प्रोसेस सेम है, आपको बस एक्सेल शीट सेलेक्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, अकाउंटिंग। और एंटर प्रेस करते ही ये वाउचर का समरी दिखाएगा और सेल्स दिखा रहा है 4 वाउचर। और भी कई सारा यूज केसेस होता है इसमें, कई तरह की एक्सेल शीट है, अलग अलग सॉफ्टवेयर से अलग अलग टाइप का एक्सेल शीट जनरेट होता है। तो हम लोग किसी भी तरह के एक्सेल शीट को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, अभी टैली के डिफॉल्ट फीचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि दिखाना नहीं, बस ये बताना कि इस तरह का फीचर अभी टैली में है। अगर आपको किसी भी तरह के अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का डेटा या अपना डेटा एक्सेल से टैली में करना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। या अगर आप डिफॉल्ट टेम्पलेट में करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास जिस फॉर्मेट में भी डेटा है, हम लोग मैप करके, ये एक नया फीचर है। नेक्स्ट इज व्हाट्सएप। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी होगा। मतलब टैली का फेसबुक के साथ एक टाई अप हुआ है, जिसमें कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर अपने कस्टमर्स को वाउचर भेजना है, लेजर भेजना है, अकाउंट्स भेजना है, कंफर्मेशन ऑफ लेजर, कुछ भी भेजना है, तो आप विद इन टैली ही उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेज, आपको वापस बाहर आकर उसको एक्सपोर्ट करके और फिर वेब व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है। विद इन टैली आप एक सिंगल क्लिक पे आते हैं आपको। जैसे ये एक सेल्स वाउचर है, सब एक क्लाइंट को, कस्टमर को भेजना है, जिसके लिए सेल्स वाउचर बना है। हम यहाँ पे व्हाट्सएप को इनेबल करेंगे और इनेबल करने के बाद जस्ट एक व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करते ही वो नंबर हमारे उस लेजर में सेट होगा, कस्टमर का, उस पार्टी का, उस नंबर पे मेरा ये व्हाट्सएप चला जाएगा। तो ये एक लेटेस्ट फीचर है टैली के में, मतलब नया फीचर। आपका कोई भी इनवॉइस, कोई भी वाउचर, कोई भी लेजर स्टेटमेंट, कंफर्मेशन, या जो भी आप टैली से प्रिंट करते हैं, प्रिंट ना करके, अटैच ना करके, आप डायरेक्ट टैली के अंदर से ही उसको क्लिक करके व्हाट्सएप, आप अपना टेम्पलेट भी सेट कर सकते हैं कि व्हाट्सएप जो जाएगा, तो मैसेज जो जाएगा वो किस तरह का जाएगा। बस जस्ट यहाँ पे व्हाट्सएप का एक बटन है, व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करते ही ये वाउचर उस नंबर पर चला गया। के बाद जो हमारा ये जो 5.1 रिलीज है, उसका ये है कनेक्टेड जीएसटी। जीएसटी तो पहले से कंप्लायंस में हमारे पास सब कुछ था ही, लेकिन कनेक्टेड नहीं था। मतलब अभी तक क्या होता था कि हम लोग जेसन फाइल, GSTR1 हो या जो भी हो, उसका जेसन फाइल डाउनलोड करते थे और जाके जीएसटी के साइट पे अपलोड। लेकिन जो अभी का जो टैली है, अब जो टैली प्राइम आपको मिल रहा है मार्केट, तो है वो कनेक्टेड जीएसटीएन है। वो मतलब कि जीएसटी नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी, टैली के बाहर जाके कोई फाइल कहीं अपलोड करने की जरूरत। ये भी हम आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाते हैं, GSTR1 का एक एग्जांपल ले। अभी इसमें क्या होता है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि GSTR1 का जेसन फाइल डाउनलोड करते हैं और जीएसटी के वेबसाइट पे जाके अपलोड करते हैं, या फिर वहां एरर आता है, फिर हम उस एरर को सुधारते हैं और फिर यहाँ से फिर वो फाइल जनरेट। लेकिन चूंकि अब ये कनेक्टेड है, ये चूंकि कनेक्टेड है, तो आपको जस्ट एक सिंगल क्लिक से ये आपका GSTR1 डायरेक्टली अपलोड एंड फाइल हो। आपको उसके लिए जेसन फाइल क्रिएट करके जीएसटी के वेबसाइट पे जाकर उसको अपलोड करने की,
अगर आपके रिटर्न में किसी तरह का कोई एरर होगा, सपोज कैंसिल हुआ होगा, तो उन सब का भी इंफॉर्मेशन आपको विद इन टैली मिल जाएगा। रिटर्न फाइल करने से पहले भी आप चेक कर सकते हैं कि कोई कैंसिल, अगर सपोज कोई B2B इनवॉइस बना हुआ है और उसका GSTN कैंसिल हुआ, तो ये आपको यहीं पर आपको ये दिखा देगा कि हाँ कैंसिल है। तो ये सारी चीज अब विद इन टैली आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो आप रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रिटर्न डाउनलोड कर सकते हैं एंड रिटर्न रिकंसाइल कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि 2A एंड 2B का रिकंसिलेशन डायरेक्ट होता है, तब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो अपने टैली में कर रखी हो उसका रिकंसिलेशन पोर्टल से डायरेक्ट होता है, और यहाँ पर ये आपको एक रिपोर्ट भी देता है में आपका जो भी ITC जो रिस्क पे होगा, मतलब कि परचेज इनवॉइस ऐसा होगा जिसका पे टू बी में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, तो उसका रिपोर्ट भी आपको यहाँ इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस है, लेकिन टाइम उतना नहीं है कि सारे वीडियो को आपको देखना। ये एक बहुत अच्छा फीचर अभी टैली में इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पे GST नंबर से आप लेजर क्रिएट। अभी तक क्या होता था, हम कोई लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसका पूरा डिटेल डालते थे, उसके बाद GST नंबर डालते थे। अब क्या है, सिर्फ नंबर डालेंगे तो उसका पूरा डिटेल हमारे पास आ जाएगा, जो डिटेल GST पोर्टल पे है उस GST नंबर के अगेंस्ट। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे अपडेट एज पर पोर्टल, तो वो लेजर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। और सिर्फ क्रिएट ही नहीं होगा, उसका पूरा डिटेल भी, एडिशनल डिटेल भी आएगा। क्या उसका ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस तरह की एंटिटी है, वो का लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, ये सारा डिटेल जो भी पोर्टल पे होता है वो यहाँ आ जाएगा, और आपका लेजर भी ऑटोमेटिकली। तो ये फीचर हो गया कनेक्टेड GSTN का। अपलोड, डाउनलोड, रिकंसिलेशन, ऑटोमेटिक लेजर क्रिएशन, ये सारा हो गया कनेक्टेड। के बाद अगर हम बात करें ई इनवॉइसिंग, तो ई इनवॉइसिंग टैली में डायरेक्टली पहले से ही ये फीचर था, का फीचर ये पहले से ही हो रहा है और बहुत ही सिंपल है। टैली के ई जस्ट एक सिंगल क्लिक पे टैली के अंदर से ही आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी जो एक्टिविटी कैंसिल कर आप विद इन टैली कर, आपको जाने की नहीं पड़ती है। अगर किसी भी तरह का कोई टैली आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस आपका इनवॉइस जनरेट करना है ट्रांजैक्शन, तो ये टैली खुद से आपको आइडेंटिफाई कर लेता है, और जस्ट एक सिंगल क्लिक पे आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाता है। और अच्छी चीज, इनवॉइस जनरेट होने के बाद जो IRN और QR कोड जनरेट होता है, वो दोनों आपके डेटा के साथ हमेशा इसमें स्टोर रहता है। इनवॉइस पोर्टल से तो हट गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वो हमेशा जब भी हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो इनवॉइस के ऊपर IRN एंड QR कोड आएगा। तरह से जिस तरह से ई इनवॉइस सिंपल है, ई वे बिल भी टैली में डायरेक्ट क्रिएट होता है। आपको ई वे बिल के पोर्टल पे जाके सारा इंफॉर्मेशन करके ई बिल क्रिएट करने की, अगर आप चाहते हैं या आपके कस्टमर चाहते हैं के साथ साथ ई वे बिल भी क्रिएट है, ऑन अ सिंगल क्लिक ई वे बिल भी जाता है। जिसमें आपको डिस्टेंस भी डालने की जरूरत नहीं है, इसमें तो सब कुछ डला ही होता है। सिर्फ पार्ट बी फिल करना होता है, मतलब ट्रांसपोर्टर का डिटेल या फिर जो ट्रांसपोर्ट का डिटेल है। बाकी तो सारा इनवॉइस में हम लोग डालते ही हैं, तो बस एक बिल भी हमारा जनरेट हो जाता है। सिर्फ जनरेट ही नहीं, अगर आप किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, अगर रास्ता डाउन हुआ करना है, विद इन टैली हो जाता है, उसके लिए भी आपको पे जाने की जरूरत। तो ये इनवॉइस एंड ई वे बिल से भी रिलेटेड कुछ वीडियोस है, लेकिन टाइम उतना नहीं है, हम नहीं जा रहे बहुत। जस्ट यही बताना था कि इनवॉइस ई वे बिल ये बहुत सिंपल है टैली में, बहुत सारे कर रहे हैं इसको।
अब क्या है कि ये पूरा, अब हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो ये टैली है ये कनेक्टेड जीएसटी हो। कनेक्टेड जीएसटी मतलब पहले क्या था कि सिर्फ ई इनवॉइस एंड ई वे बिल कनेक्टेड डायरेक्ट विद इन टैली कर पाते थे, लेकिन अब रिटर्न अपलोड फाइल करना, अपलोड करना, रिटर्न रिकनसाइल करना, ऑटोमेटिक लेजर क्रिएट करना, वो सारी चीज जाके कर, अब हम डायरेक्ट टैली से ये हमारा एक और प्रोडक्ट है जिसको हम लोग होंगे AWS, Amazon वेब सर्विस। Amazon वेब सर्विस वर्ल्ड लीडर है क्लाउड सर्विस। तो अब हमारा टैली जो है वो सिर्फ आप एक ऑफिस प्रेमाइसेस में चला सकते हैं। अगर आपका या आपके कोई कस्टमर का मल्टीपल ब्रांच है, मल्टीपल लोकेशन, और वहां से वो चाहता है कि एक ही डेटा पे हम मल्टीपल ब्रांच से मल्टीपल काम कर जीएसटी रिटर्न फाइल कर सके, तो हमारे पास अब ये ऑप्शन है कि हम Amazon वेब सर्विस पे टैली प्राइम दे रहे हैं ऑन AWS, टैली प्राइम ऑन Amazon वेब सर्विस। क्या होता है कि हम लोग एक डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन या डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड करते हैं, डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि वो कहीं एनीवेयर एनी टाइम वो एक्सेस कर सके अपने डेटा को।
सफारी रिट्रीट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट का आया अभी दिसंबर के महीने में। द अदर थिंग्स दे हैव नॉट डिसाइडेड, उन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट के ऑर्डर को एक तरह से खत्म ही कर दिया कि जो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर में, बट एक उन्होंने बड़ा अच्छा इशू डिसाइड, वेरी अपरेंट, कि सेक्शन आप देखिएगा 17(5) का सबसेक्शन क्लॉज सी है, क्लॉज डी है। क्लॉज सी में फ्रेज यूज है प्लांट एंड मशीनरी, एंड क्लॉज डी में फ्रेज यूज है प्लांट और मशीनरी। उन्होंने इस डिस्टिंक्शन को बहुत ही एलोबरेटली डिस्कस किया है एंड फाइनली ये बता दिया कि अगर आप जो भी कैपिटल गुड्स परचेज करते हो एंड उसका इनपुट लेना आप चाहते हो, अगर वो प्लांट या मशीनरी की श्रेणी में आता है, प्लांट और मशीनरी के साथ वाले नहीं, प्लांट को अलग ट्रीट किया है एंड और के डेफिनेशन को उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। तो प्लांट और मशीनरी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था और बोला कि नहीं, अगर इसमें आ जाते हैं तो आपका केस ब्लॉक क्रेडिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। इस बजट में 17(5)D का स्पेसिफिक अमेंडमेंट, वो जो क्लॉज डी है उसमें प्लांट और को हटा के उन्होंने एंड लगा दिया और उसको रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया 1 जुलाई 17 से। मुझे याद है, मुझे भी काफ़ी साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, 32 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तो अरुण जेटली जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उस समय स्पेसिफिकली इशू पे बहुत डिस्कस हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डन अवे करने के लिए ये लोग रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करते हैं और पूरी समझिए कि जो टैक्स स्ट्रक्चर का ढांचा जो है वो बिखर जाता है। आदमी अपनी टैक्स प्लानिंग करता है, एसएससी अपनी टैक्स प्लानिंग करता है, लॉयर अपने केस को बिल्डअप करता है, बट वो जाके वहां पर पूरा वो एक सिंपल अमेंडमेंट से जो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ठीक है अमेंडमेंट करने का पावर है, कोर्ट्स ने भी कहा है कि उनको ये पावर है, बट इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए उन्होंने कहा था कि नहीं करेंगे। बट व्हाट द अदर गवर्नमेंट वाज डूइंग, दिस गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग। So on these things also we would like to have some comment. So we have a learned speaker. I would request Raini Goyal one more thing, that she should make this session interactive so that कि लोग सोए नहीं और आपस में बात कर सकें। Thank you. पटना टैक्स कॉन्फ्रेंस में आए सभी महानुभावों को मेरे तरफ से नमस्कार। जैसा कि अनवर भाई ने बोला कि थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखिएगा, तो मैं तो इंटरैक्ट करती ही रहूँगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप भी मुझसे इंटरैक्ट करें और मेरी बात को अगर समझें तो मुझे और थोड़ा समझाने की या बताने की कोशिश करें कि आपको समझ में आया, और अगर नहीं आए तो मुझसे वापस प्रश्न करें कि तुमने जो भी बोला उसका कोई मतलब नहीं निकला, फिर से बताओ। ठीक है, तो इस अनुरोध के साथ और चेयर की परमिशन के साथ शुरू करती हूँ। 3 टॉपिक मुझे दिए गए हैं। 16(4) की जो एमनेस्टी स्कीम है उसके ऊपर बोलना है, 128A पे बोलना है और बजट प्रपोजल पे बोलना है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में जो सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज थी उसके ऊपर अनवर भाई ने डिटेल में आपको बताया और उस पर हम चेयरमैन सर के भी थोड़े व्यूज लेना चाहेंगे क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, उसको हम आखिर में लेंगे। और एक मुद्दा है प्री डिपॉजिट का, जो कि अपील में चेंजेस किए गए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मामला है नहीं, आखिर में लेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों एमनेस्टी स्कीम, उस पर पहले बात करूंगी बारी बारी से। तो सबसे पहले 16(4) पे शुरू करने के पहले एमनेस्टी पे बात करती हूँ। कोई मुझे बता सकता है एमनेस्टी का मतलब क्या है? व्हाट इज एमनेस्टी? एमनेस्टी स्कीम आएगी ये बोल के हमें इतनी उम्मीदें जागती हैं, जब भी कोई बजट या काउंसिल मीटिंग होती है हम मांगते रहते हैं एमनेस्टी एमनेस्टी एमनेस्टी। क्या है एमनेस्टी? कोई बताएगा मुझे? एमनेस्टी का अर्थ क्या है?
बिना ट्रायल या कन्विक्शन के जब मास में कोई अपराध किया जाता है, उसमें जब किसी कंडीशन के तहत और बिल्कुल नपी तुली सीमाओं के अंदर जब कोई क्षमादान दिया जाता है, उसे एमनेस्टी कहते हैं। ये एक पॉलिटिकल टर्म है। जब यूएस में वॉर्स बहुत होते थे, यूएस अलग अलग कंट्रीज से वॉर करता था, तब ये कॉइन किया गया था टर्म एमनेस्टी। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए यूज होता था और अब टैक्स पेयर्स के लिए यूज होता है। अब ये खुशी की बात है या दुख की बात है, ये आप लोग तय कीजिए। ठीक है, तो एमनेस्टी स्कीम जैसे इन्होंने वर्ड लगाया, क्या 16(4) के लिए दी गई ये स्कीम वाकई एमनेस्टी स्कीम है? ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक इस पे फैसला नहीं करा। और उस बीच में इसको उठा के काउंसिल में इसे एमनेस्टी स्कीम का नाम देकर दे दिया गया और हम लोग सब बहुत खुश हुए। हमारी ये खुशी थी कि चलो जान छूटी। कितने साल के लिए है ना? 4 साल के लिए, 3 नहीं, 3 तो एमनेस्टी इंटरेस्ट वाली में है, उस पे आऊंगी। इसमें यह बताया कि मार्च 21 तक के जितने भी लेट फाइलिंग की वजह से आईटीसी का जो भी इनएडमिसिबिलिटी है, इनएलिजिबिलिटी है, उसके तहत जितने भी नोटिस ऑर्डर जारी किए गए, उन सब में हम मास को क्षमादान देते हैं अगर उन्होंने 30 नवंबर 21 के पहले रिटर्न लगा दी हो। तो एक कंडीशन आई। तो सबसे पहली बात जो हमें एज लीगल प्रोफेशनल समझनी है कि जब भी एमनेस्टी आएगी तो उसमें कोई ना कोई सीमा कंडीशन जरूर होगी जिसको मानना होगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई 30 नवंबर 21 तक दिया, उस डेट में ऐसा क्या था? हमने तो 2 दिसंबर को लगाई थी रिटर्न, ने हमें भी मिलना चाहिए। तो जो एमनेस्टी 30 नवंबर 21 के पहले तक फाइल वाली रिटर्नों को मिली, वो 2 दिसंबर या 1 दिसंबर वालों को भी नहीं मिलेगी। अब क्या इसके अंदर कोई और लीगल ग्राउंड बनता है इसके ऊपर रिट या एसएलपी लगाने का? इस बात के लिए मैं चेयरमैन सर का थोड़ा सा व्यूज लास्ट में सुनना चाहूंगी। मुझे भी इसमें कुछ जानने की इच्छा है कि भाई उन लोगों का क्या होगा, और अगर उन लोगों का कुछ होगा और उसमें यही बोल दिया गया कि 16(4) अल्ट्रा वायर्स है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या ये एमनेस्टी वैलिड रहेगी फिर? तो इस तरह के लीगल इश्यूज आते रहेंगे। फिलहाल हमारे लिए अच्छी बात यह है कि कम से कम 4 साल जो कि पहले साल थे जीएसटी के, उनमें डीले होना कुछ हद तक जायज था, तो उन लोगों को रिलीफ मिल रही है। ठीक है, तो इसी से शुरू करते हैं। तो यही इसका पर्पस था कि मेजर रिलीफ मासेस में जो जीएसटी टैक्स पेयर्स के साथ हुआ था, जब गवर्नमेंट ने स्टैटिस्टिक्स देखी कि बहुत सारे लोगों ने सेम गलती करी है, तब उन्होंने ये एमनेस्टी दी। तो जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने गलती नहीं करी होती है, उसमें सरकार एमनेस्टी नहीं लाती है, जो कि 2A 3B में नहीं ला रही है। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने क्या प्रोविजन लाया, क्या चीजें आई इसमें, इस एमनेस्टी में क्या है, कोई मुझे बताएगा? अगर कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, 16(4) की डिफॉल्ट हुई पहले 4 सालों में, लेकिन कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, क्या उन्हें एमनेस्टी क्लेम करनी है? नोटिस तो आया नहीं, 73 का नोटिस तो आया नहीं, 74 का अभी भी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता सर, बताएंगे? यही तो मैं चाह रही थी, आपने मदद करी मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए क्यों नहीं आ सकता? 17-18 का, 74 का भी टाइम अप हो गया, इसलिए नहीं आ सकता। एकदम सही बोला भाई साहब ने। अब बाकी सालों का आ सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये स्कीम में बताया गया। क्या बोला उन्होंने कि अगर कोई नोटिस जारी ही नहीं हुआ तो भी ऑफिसर को सुओ मोटो इसका रिकॉग्निशन करना है, कॉग्निजेंस लेना है और उसको ड्रॉप करना है, क्लोज करना है, ताकि सिस्टम के थ्रू जब सिस्टम का इंटेलिजेंस मॉडल काम करे तो ऑटोमेटिकली कोई भी बोगस नोटिसेस जारी नहीं हो। ये इसलिए ये जिम्मेदारी अफसरों को दी गई, ये हमारे कुछ करने का नहीं है, क्योंकि हमें तो नोटिस नहीं आया। और 16(4) क्या 74 का मैटर है, उसमें कोई सप्रेशन है क्या सर? जितने भी लोग बैठे हैं वो मुझे बताएंगे कि 16(4) की डिफॉल्ट क्या सप्रेशन है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? सप्रेशन क्या होता है, किसी ने बताया है हमें? किसने बताया है?
एक्ट ने बताया कि जो चीजें रिटर्न डॉक्यूमेंट में बतानी है वो नहीं बताई तभी सप्रेशन माना जाएगा ना। तो रिटर्न कब फाइल हुई क्या सिस्टम ने नहीं बताया? बताया। और उसमें कितना आईटीसी क्लेम किया ये बताया? बताया। तो इसलिए 74 में हो ही नहीं सकता, जो कि आप सभी कह रहे थे कि इसको होना नहीं चाहिए, लेकिन उस रीजन के लिए हमें उसके लिए फिर से जाके लड़ना पड़ सकता है। तो ये जिम्मेदारी अफसरों को दी गई कि यू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस न्यू प्रोविजन एंड यू गिव द ऑर्डर सो दैट द इशू स्टैंड्स क्लोज्ड इन द सिस्टम। क्योंकि जीएसटीएन में एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस मॉडल काम करता है पीछे। वो कब किसको नोटिस जारी करेगा किसी को नहीं पता। वो एक बटन दबाते हैं सारे बन जाते हैं अपने आप। जैसा अभी टैली वाले बता रहे थे ना, वो एक बटन दबाते हैं सारे लेजर बन जाते हैं, एक बटन दबाते हैं सारे एंट्री आ जाती है, ट्रांजैक्शन आ जाते हैं। तो वैसे ही जीएसटीएन में भी आ जाता है। पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे आए ना, काफी सारे स्टेट्स में आए ऑटोमेटिक नोटिसेस, और बिना लड़ने वाली चीजों पे हम लोग लड़ने गए और वो एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी थी, तो ज्यादा दर्द भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये स्कीम इफेक्टिव कब से हुई सर? 7 जनवरी से इसको उन्होंने जारी किया सिस्टम में। नोटिफिकेशन तो पहले आ गया, सब चीजें आ गई, इसको सिस्टम में एक्टिवेट किया इन्होंने 7 जनवरी 25 से। और इसको नलीफाई करना था, और जो भी आईटीसी डिस्प्यूटेड था इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16(4) उसको नलीफाई कर देना है डिस्प्यूट को, और उसको अलाउड मान लेना है। राइट? अब इसकी एक नेगेटिव साइड भी देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या होता है। जिसने पे कर दिया उसको वापस नहीं देगा। एक और कंडीशन हो गई, ये भी एक अजीब तरह की चीज हो गई, ये भी एमनेस्टी में ही होती है कि जिसने नहीं दिया उसको माफ कर रहे हैं, जिसने दे दिया उसको आना नहीं है, तुम चले जाओ, तुम्हारी क्षमता थी तुमने दे दिया, इनकी क्षमता नहीं थी, इनसे ये पाप हुआ, चलो हम माफ करते हैं। दिस इज एमनेस्टी। तो क्या इसमें हम लड़ सकेंगे कि जिनको रिफंड नहीं मिल रहा है बट दिया है, अगर एमनेस्टी आई है तो उनको मिलना चाहिए? इज दिस अ पोटेंशियल केस to be presented before any suitable forum? My question to the learned senior advocate with us. मैं थोड़ी सी चीजें इनसे आज सीख के जाऊंगी, ये बेनिफिट लेने के लिए आई हूँ। तो सर इस पे भी मुझे थोड़ा सा एनलाइटन कीजिएगा कि क्या ये चीज कहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत लोग दुखी रहते हैं कि भाई हमें तो बेवकूफ बना दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनको तो बेनिफिट दे दिया, और हमें डर लग रहा था, हमने सब भर दिया, अब हमें फंसा लिया इन्होंने। हमने तो इंटरेस्ट भी दे दिया जी, हमें तो 128A भी नहीं मिला, 16(4) भी नहीं मिला, ये क्या हो गया हमारे साथ? तो इस चीज पे थोड़ा सा प्रकाश हम सर से डलवाएंगे। और इसके अंदर जो भी फाइलिंग करनी है, इसका जो नोटिफिकेशन आया वो दोनों एक ही डेट में आए थे, दोनों एमनेस्टी के। तो इन्होंने स्पेशल प्रोसीजर एक और बताया रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन की बात कब आएगी? जब कोई नोटिस जारी हो गया। मैं पहले बता रही थी नोटिस जारी नहीं हुआ, उसके बीच एक सिचुएशन और रह गई कि नोटिस जारी हुआ, ऑर्डर नहीं निकला। उसमें भी वही बात आएगी कि 73 का ऑर्डर जारी करने का तो टाइम लिमिट ही रह गया, अब तो खत्म। तो उसमें क्या कोई कुछ कर पाएगा? लेकिन उसमें भी ऑफिसर को कॉग्निजेंस लेके प्रॉपर ऑफिसर को प्रोसीडिंग्स को क्लोज करने के लिए स्कीम में बताया गया कि इन्हें भी क्लोज कर दो, क्योंकि हम तो ये मान के बैठे कि क्लोज ही है, बट उनके सिस्टम में अफसर करेगा। तो अगर किसी ने नहीं कर रखा है तो कह के भी करा लें तो कोई नुकसान नहीं है। वो लिखा पड़ा है सर्कुलर में, आप वो दिखाएंगे तो वो कर देंगे। तीसरी सिचुएशन आई कि नोटिस जारी हुआ और ऑर्डर भी इशू हो गया, डिमांड कंफर्म हो गई, जो कि बहुत सारे केसेस में हुए। तो अब जब ऑर्डर जारी हो गया तो उसमें कितनी सिचुएशन आएंगी? अब आप लोग बताइए। अब सिचुएशन मैं नहीं बताऊंगी, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो। नोटिस जारी नहीं हुआ, हमने कवर किया। नोटिस जारी हुआ, ऑर्डर नहीं आया, ऑफिसर की ड्यूटी। नोटिस जारी होके ऑर्डर आ गया। जैसे ही ऑर्डर आ जाता है तो जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? बर्डन ऑफ कंप्लायंस कम्स अपॉन द टैक्स पेयर। तब हमें क्या करना है? उसमें कितनी सिचुएशन हो सकती है? मुझे एक एक करके कोई बताएं प्लीज, जिसको भी पता है या कोई सिचुएशन उन्होंने सोची हो, देखी हो तो बताएं। नहीं, डालने का तो बाद में, सॉल्यूशन हमारा एक्शन बाद में। अगर ऑर्डर आ गया तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? कोई अपील फाइल नहीं हुई, अपील फाइल हो गई लेकिन पेंडिंग है, और
अपील फाइल भी हो गई और रिजेक्ट भी हो गई, डिसमिस हो गई, और फिर ट्राइब्यूनल तो अभी तक बना नहीं है तो वहां पेंडिंग है, या फिर किसी ने हाई कोर्ट लगा रखा है, स्टे ले रखा है। ये सारी सिचुएशंस आई हमारे सामने। तो इस सिचुएशन में क्या करना है ये भी स्कीम ने बताया है। तो पहली सिचुएशन में क्या होगा सर बताएं मुझे, कि कोई अपील फाइल नहीं हुई है, ऑर्डर आया हुआ है, रेक्टिफिकेशन का स्पेशल प्रोसीजर जो बताया गया अंडर सेक्शन 148, उस प्रोसीजर में सिस्टम के द्वारा, पोर्टल के द्वारा रेक्टिफिकेशन पिटीशन लगानी है। और उस पिटीशन के तहत अगर आप सर्कुलर को देखेंगे उसमें एक एनेक्शर ए है, वो एनेक्शर ए आपसे डिटेल्स भरवाता है उस पर्टिकुलर अपील के ऑर्डर की, और उसमें कितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है, और उसमें से जितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है, गौर कीजिएगा बात पे, इसमें एक जो इशू अनवर भाई ने रेज किया था उसका आंसर भी छुपा हुआ है, मैं आपसे पूछूंगी जब उस मुद्दे पे आऊंगी, कि जितना अमाउंट उस ऑर्डर में डिस्प्यूटेड है वो बताना है, ऑर्डर का नंबर डालना है, और फिर जितना 16.4 का डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो 16.5 से आपका अलाउ हो रहा है या फिर 16.6 से अलाउ हो रहा है, वो दोनों के लिए दो अलग अलग टेबल हैं, वो बताने हैं। उस एनेक्शर को मैन्युअली प्रिपेयर करके टैक्स पेयर से सिग्नेचर कराना है और उसे अपलोड करना है, और ऑर्डर की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी अपलोड करनी है। क्लियर है? सबको समझ में आया? इसमें कोई इशू आ सकता है क्या? कोई मुझे बताएगा, जो सेंट्रल के ऑर्डर से डील करता है उसे बताना चाहिए। सेंट्रल के केसेस जिसके पास हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको पता होगा ये इशू, क्योंकि स्टेट के तो सारे ऑर्डर हमें पोर्टल पे मिलते हैं, सेंटर के नहीं मिलते हैं। तो जब नहीं मिलते हैं तो हमारा इमीडिएट थॉट प्रोसेस आता है कि हम मैनुअल दे दें। तो मैनुअली प्रोसेस करने के लिए ना तो कोई इंस्ट्रक्शन है और ना ऑफिसर के पास कोई मैकेनिज्म है। अगर आप देंगे तो वो उसे स्वीकार ही नहीं करेगा या साइड में डाल देगा। तो इसके लिए आप उन्हें चिट्ठी लिखें कि आप उस ऑर्डर को अपलोड करिए, हम इसमें ये क्लेम करना चाहते हैं, और उनसे वो ऑर्डर अपलोड कराकर फिर आपको वो अप्लाई करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन पोर्टल के द्वारा ही ली जाएगी, ये बात सर्कुलर में भी लिखी है, जो कि ऑफिसर पे बाइंडिंग है, वो मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं करेगा और एक नया राउंड ऑफ लिटिगेशन खड़ा हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जैसे ही हमारे पास कोई आए हमें पहले चेक करना है कि ऑर्डर पोर्टल पे है या नहीं, और उस पर करेक्टिव एक्शन लेना है राइटिंग में। फिर आप ये पिटीशन बहुत सिंपल है, अपने आप ऑर्डर नंबर ड्रॉप डाउन से आएगा, उसमें से जो ऑर्डर पे आप लगा रहे हैं उसको सिलेक्ट करिए, एनेक्शर ए में उसके फिगर्स भरिए, और जितना 16.5 और 16.6 से आप अलाउ करवा रहे हैं वो भरिए और उसको साइन करके अपलोड कर दीजिए। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर अपलोड कर दीजिए। तो ये रेक्टिफिकेशन जो प्रॉपर ऑफिसर है जिसने ऑर्डर पास किया था वही कर देगा। ये क्लियर हो गया? अब हम सिचुएशन में आए जिसमें अपील फाइल हो गई और पेंडिंग है। हाँ जी, यस, वहां अभी एपेलेट अथॉरिटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं आप कि उनके ऊपर अब जिम्मेदारी आ गई। कहने का मतलब लास्ट एक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर बर्डन ऑफ कंप्लायंस है, उसे एक्शन लेना है। स्कीम ने ये बताया मोटा मोटा कि जो लास्ट एक्शन हुआ है उसके बाद का बर्डन ऑफ कंप्लायंस जिसके हाथ में है उसे एक्शन लेना है और लास्ट में रिलीफ देनी है। हाँ, आ रहा है, बट जब तक ऑर्डर नहीं हुआ है रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जिसमें ऑर्डर पेंडिंग है उसमें जरूरत नहीं है, जिसमें ऑर्डर हो चुका अपील का उसमें जरूरी है, वहां आएगा ऑप्शन आपको। तो जिसमें अपेलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी, आप उन्हें एक रिटन सबमिशन दे दीजिए ताकि वो भूले नहीं या पेंडिंग ना रखे, और आप उसको डिस्पोज कराइए। दोनों में आ रहा है, बट उसको नहीं देखना है, ऑफिसर से ऑर्डर कराना है। यही बात मैं कह रही हूँ, वहां उसका कोई काम नहीं है। वहां आप लगाएंगे तो शायद वो आगे उसको ऑफिसर को दिक्कत आ सकती है, और कुछ कुछ सीजीएसटी ऑफिसर्स को आ रही है, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट पोर्टल पे एक्सेस नहीं है, वो थर्ड पार्टी टूल से करते हैं। हाँ, तो वो फंस जाता है टेक्निकल ग्लिच में। तो जहां ऑर्डर पास नहीं हुआ है वहां रिटन सबमिशन मैन्युअली देके करा लीजिए। जहां स्टेट अथॉरिटी है वहां तो हो जाता है, वो लोग कर लेते हैं, उनके हाथ में है चीजें।
तो आप यूनिफॉर्म प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ऑफिसर विल ड्रॉप द डिमांड। और अगर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, अगर आप लोगों ने पढ़ा, दे आर नॉट डूइंग, आप रिटन सबमिशन दे के उनके पास जाओ तब वो करेंगे, नहीं तो वो करेंगे नहीं। उसके अदर रीजंस भी हैं जिस पे मैं बात नहीं करूंगी, वो आप लोग सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। तो वो जब आप रिटन सबमिशन दे के जाओगे और उनसे अनुरोध करोगे तो वो कर देंगे आपका। अब इसमें एक तकलीफ और जो आती है वो ये आती है कि कभी कभी उस अपील में 1656 के अलावा और भी मुद्दे होते हैं, या फिर अगर आपने स्टेट के जो एआई से जनरेटेड नोटिसेस देखे होंगे उसमें एक बात नोटिस करी होगी कि उसमें कई बार क्या होता था, ब्लॉक्ड क्रेडिट की भी डिमांड आती थी, कॉमन क्रेडिट 42 43 की भी आती थी और 16.4 की भी आती थी। तो जो सबसे बड़ा होता था उसको हम ड्रॉप करा लेते थे और हम कहते थे कि सारा आईटीसी इसमें आ ही गया तो बाकी इश्यूज को देखने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है। तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा फिगर है उसको ही उन्होंने कंफर्म कर दिया तो बाकी ग्राउंड्स देखे नहीं। अब ये निकल गया एमनेस्टी में, तो जो अंदर ब्लॉक्ड क्रेडिट और जो 42 43 के इश्यूज थे वो अगर एग्जामिन ही नहीं हुए, वो यहाँ पे अथॉरिटी को एग्जामिन करके ऑर्डर पास करने की बात कही गई है स्कीम। तो जब उस तरह के ऑर्डर हो तो हमें होमवर्क करके जाना है और उनको वो चीजें अलग से एक्सप्लेन करनी है, वरना वो रुक सकता है। तो उसको कैसे जस्टिफाई करना है, कौन से पेपर्स देने हैं, वो नीड आ सकती है। 16.4 अलाउ हो जाएगा, बट सेम इशू में कोई और इशू एंटेंगल्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि 16.4 के अलावा और भी दूसरा इशू है, तो उसमें वो सिर्फ एमनेस्टी वाले फिगर को लेगा, इसीलिए एनेक्सर ए है। वो कहता है टोटल डिमांड, डिमांड फॉर 16.5, डिमांड फॉर 16.6 क्या है वो भी मैं बात करूंगी। 16.5 तो बड़ा सिंपल है, सबको लर्न है। 16.6 भी हम लोग बात करेंगे। पहले तीनों सिनेरियो खत्म करते हैं। अब बात आई कि अपेलेट अथॉरिटी ने भी ऑर्डर दे दिया, ट्राइब्यूनल फॉर्म हुआ नहीं, इसलिए कोई और अपील फाइल नहीं हुई है। लास्ट एक्शन क्या है? अपेलेट ऑर्डर। तब हम उसमें फिर से रेक्टिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। उसमें वो ऑप्शन आ रहा है जैसा सर ने बताया। यस, so there you can initiate rectification in terms of the special procedure prescribed and you can get the benefit of amnesty by getting a rectified order. तो वो rectified order वो लोग APL 04 का rectify करके दे देंगे। ठीक है, यहां तक सब मेरे साथ है? कोई चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज बोलेंगे। ओके है, क्लियर है, सिंपल है। तो मैं बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी और ये सब स्लाइड्स में नहीं जा रही हूँ, तो जिनको नींद आएगी तो थोड़ा देखने के लिए रखा है हमने, बातें करेंगे तो अच्छा समझ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या आया कि अपील तो ट्राइब्यूनल में फाइल हो नहीं सकती, बहुत बड़ा अमाउंट था, रिकवरी ना हो जाए, हम लोग हाई कोर्ट चले गए, रिट पिटिशन फाइल करी। तब क्या होगा सर? जो अपील में करना है वही हाई कोर्ट में करना है, तो वहां हाई कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा अगर आप आर्ग्यू करेंगे। दे कैन गिव डायरेक्शन टू द प्रीवियस ऑफिसर हु इज द प्रॉपर ऑफिसर हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिसने ओरिजिनल एडजुडिकेशन ऑर्डर किया था, उसको हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि आप इसको क्लोज करो, प्रोसीडिंग को, इसका कॉग्निजेंस लो और स्पेशल प्रोसीजर ऑफ रेक्टिफिकेशन को फॉलो करते हुए इस डिमांड को कैंसिल करो। We have to go and tell the court to take this, to issue this direction. We have to pray that this may be done because of this scheme in place. So you may direct the officer having jurisdiction to pass the proper order as per the scheme. Pardon? अगर डिपॉजिट दिया हुआ है एंड स्टे हैज बीन टेकन, तो उस केस में डिपॉजिट का रिफंड का प्रोसीडिंग अलग से होगा। पहले ऑर्डर पास कराना है सर। इट्स अ 3 स्टेज 3 लेयर्ड वर्क सर। 3 times वी विल वर्क। यस, पहले डायरेक्शन लेंगे, direction, after issuance of direction, in my view, the proper officer will close the proceedings, drop the demand, then the taxpayer has to apply for refund on the portal.
we may need not go to the court again unless there is some unwise activity. रिफंड की क्लेम भी उसी के पास जाएगी जिसने ऑर्डर करा था, जिसने ड्रॉप किया था, उसी के पास रिफंड क्लेम जाएगी और दैट विल बी ड्यू टू एन ऑर्डर एंड देन दे विल ग्रांट इट. स्टे तो जब आपका डायरेक्शन दे दिया तो वो वेकेट कराना ही है सर आपको. You have to serve the copy of the court order and then you have to serve the scheme also, and you have to tell him to do the rectification because system will not allow. आपके स्पेसिफिक केस में कोर्ट का डायरेक्शन आया वो सर्व करा आपने, बट दे आर नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस. नहीं, स्टे इज आफ्टर पेमेंट ऑफ अ सर्टेन प्री डिपॉजिट, करेक्ट ना? यही बोल रहे हैं कि कुछ प्री डिपॉजिट पे हो गया, बाकी की रिकवरी स्टे हो गई. हाँ, स्टे तो जैसे ही कोर्ट ने मामले को खत्म कर दिया डायरेक्शन देके, तो स्टे आपका इमीडिएटली खत्म हो गया सर, क्योंकि अब तो रिकवरी बनी नहीं रही, स्कीम लॉ में आ गई है. हाँ, जब तब तक तो वो पिटिशन पेंडिंग है ना सर. बिल्कुल. नहीं, डायरेक्ट पे आएंगे सर, अभी हम अपील वाला कर रहे हैं. राइट. नहीं, जब तक सर कोर्ट में पेंडिंग है वो कुछ नहीं करेगा, जो मैं समझ रही हूँ वो कुछ नहीं करेगा. पहले आपको कोर्ट से डायरेक्शन लेके जाना होगा. क्या हो गया वहां करेंगे. After serving the court's direction to the jurisdictional proper officer, मतलब आप शायद सर वो केस बोल रहे हैं जिसमें अपील नहीं हुई, डायरेक्ट हाईकोर्ट हुआ होगा. स्टे ऑर्डर दिया होगा ना सर, अभी आपको उसको फाइनल कंक्लूड करा के डायरेक्शन इशू कराना है ऑफिसर को. राइट. You will have to file an interim application in my view. I may stand corrected because I am only a chartered accountant. You know the court procedures better than me. So in my view, you should file an application before the court that this action be taken and a direction be issued taking cognizance of this scheme. So then the Honorable Court will give a direction to the proper officer to do the needful in light of the scheme. And this is working in Assam. What we have done, it is done nicely. So with my experience, I am able to tell you. कर रहा है ऑफिसर, नहीं करेगा तो फिर से लिटिगेट होगा, वो तो इशू है ही. वही मैंने कहा कि कोई अनवाइज एक्टिविटी होगी तो फिर से जाएंगे सर, डिस्पोज कराना पड़ेगा हमें. कोर्ट विल पुश द केस आउट, देन इट विल गो बैक टू द डिपार्टमेंट. Same thing when appeal was not filed, direct high court was done, then also court will issue similar direction on our application and then it will go to the officer. No sir, no sir, I am not saying this. I will repeat what I am trying to say if it is miscommunicated. कि जब भी कोई केस कोर्ट चला गया, okay sir. Right sir. So with that we have covered the issue up to appellate order passed or case pending in High Court. So after High Court gives the direction, the issue will be taken up by the proper officer. Now further what situation remains in this case? Anything else remains? Because tribunal is not there, there are no appeals pending in the tribunal. There are some cases where after the appellate order, nobody has gone to the court.
They have just paid additional 10% pre-deposit and given an intimation in the department that when tribunal will be set up and constituted, then we will file appeal. We are doing pre-deposit. Please do not take any action upon us. There is no official stay from the court. There is no case pending in the court also. So in that case, again, you have to file for rectification of the order as it is appearing on the system. As simple as that. Once completed, file refund claim. मतलब मूल बात यही है कि जिसके पास कागज पेंडिंग है उसको करना है. अगर टैक्स पेयर के पास है तो वो रेक्टिफिकेशन मांगेगा, ऑफिसर के पास है तो वो कॉग्निजेंस लेके ऑर्डर देगा स्कीम के अंडर में. और अगर कोई रुपया पहले उसमें प्री डिपॉजिट में जमा हुआ है उसको पेड नहीं माना जाएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें ये बोला गया कि जिसने पे कर दिया उसको रिफंड नहीं मिलेगा, जिसने पे नहीं करा उसके लिए एमनेस्टी है. तो प्री डिपॉजिट कैन नॉट बी डीम्ड एज पेमेंट. कई अफसर ऐसा व्यू ले रहे हैं. उसमें हमको फिर से जाके इस केस को फाइट करना पड़ेगा. अब उसके लिए अपील प्रॉपर है कि हाई कोर्ट प्रॉपर है. तो अगर सर्कुलर की लैंग्वेज है जो ऑफिसर पे बाइंडिंग है तो हमें अपील में जाना चाहिए. और अगर सर्कुलर की लैंग्वेज हमारे को क्लियर नहीं लग रही है तो वी कैन ऑल्सो गो टू कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन रीजंस. मेरे हिसाब से अपील में ये काम हो जाना चाहिए और अपील इसमें बार्ड नहीं है, बिकॉज इट इज ओनली ट्राइंग टू एनफोर्स व्हाट द सर्कुलर इज सेइंग. जो सर्कुलर ने बोला है वो पहले वाला अफसर नहीं समझाए तो अपेलेट अथॉरिटी समझ सकती है. अगर आपको लगता है आपकी अपेलेट अथॉरिटी नहीं समझ रही या लैंग्वेज उतनी क्लियर नहीं है तो आपको रिट पिटिशन भी लगानी पड़ सकती है. इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, बार नहीं है. तो शायद मैंने इसके सारे सिचुएशंस डील किए. इसमें क्योंकि ये जनवरी 7 को शुरू हुआ तो इसको भी 3 महीने में ख़त्म करने की बात है. तो अप्रैल 8 के पहले पहले लगाइए जब तक कि कोई और नया नोटिफिकेशन या सर्कुलर इसको एक्सटेंड करते हुए नहीं आ जाता है. तो अब 16.5 की बात हुई. 16.4, 16.5 मैंने दोनों यहाँ डाल रखे हैं. आप लोग पीपीटी बाद में भी देख सकेंगे. 16.6 क्या है ये समझते हैं. 16.5 में तो ये बोला जिन्होंने 4 सालों के लिए रिटर्न लेट लगाई सारों को अगर 30 नवंबर 21 के पहले लगाई तो एमनेस्टी दे दो. अब बात बची उन लोगों की जिनका कैंसिल हो गया था रजिस्ट्रेशन भी में. ये है 60. कैंसिल हुए थे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कोविड के टाइम पे, उसके आगे पीछे. तो जब कैंसिलेशन हुआ था उस टाइम 16.4 की लिमिट एक्सीड हो गई थी क्या नहीं. सबसे पहले ये देखना है आपको. इसको अवेल करने के लिए हमें 2 चीजें देखनी है. रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल हुआ उसकी डेट नोट करनी है. रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद जब कैंसिलेशन रिवोक हुआ वो डेट लिखनी है. दोनों लिखिए. आप दोनों जब उसके क्लॉज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इन्होंने क्या बोला. सबसे पहला, जब कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन तब तक 16.4 की टाइम लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तभी 16.6 मिलेगा. अगर एक्सीड हो गई थी तो फिर 16.5 में जगह है. तो देखिए 16.6 आपके लिए नहीं है. फिर तो 16.5 है तो है, नहीं है तो कुछ नहीं है. बराबर समझ में आ रही है बात. की कोई एग्जांपल दूं कि अगर जिस डेट में कैंसिल हुआ, मान लीजिए कैंसिलेशन किस डेट में हुआ, 2020 में हो गया. समझ लेते हैं एक बार के लिए कि 2020 के हमारे 30 सितंबर को कैंसिल हो गया. सिंपल केस लेते हैं तो उसमें हमारा आईटीसी इन्वॉल्व हो गया 19-20 का. 30 सितंबर 20 को कैंसिलेशन हो गया. रिवोक कब हुआ? 30 सितंबर 2021 को हो गया या अक्टूबर को हो गया. चलिए 30 अक्टूबर 2021 को रिवोक हो गया कैंसिलेशन. एमनेस्टी आई थी उस टाइम, हो गया उसके अंदर एक्टिवेट हो गया. उसके बाद 3B लगाई होगी उन्होंने. उस केस में 16.6 कैसे मिलेगा आपको, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा. 19-20 के लिए हमने उस टाइम टाइम लिमिट क्या हुआ करती थी 16.4 की, 20 अक्टूबर 2020. हमने रिटर्न कब लगाई? नहीं लगाई, कैंसिल हो गया. कब कैंसिल हुआ? 30 सितंबर 20 को. तो कैंसिल हो गया, तब तक लिमिट जारी थी, क्रॉस नहीं हुई थी. फिर रिवोक हो गया मेरा
30 अक्टूबर 2021 को 16/5 ने डेट कब तक एक्सटेंड करी? क्या वो डेट इसको कुछ इंपैक्ट करेगी, या हमें सीधे सीधे ये देखना है जिस दिन रिवोक हुआ वहां से 30 दिन आगे तक मुझे लगा देना है? जिस दिन रिवोक हुआ उसके 30 दिन के अंदर अगर लगा दिया तो आपका आईटीसी अलाउड है। तो इधर कैंसिलेशन की डेट 16/4 के पहले और रिवोकेशन के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड, ये दोनों कंडीशन मीट हुई तो 16/6 में आपका आईटीसी अलाउ हो जाएगा। इसमें से अगर फेल हुई तो नहीं मिलेगा। क्लॉज नंबर 1 पढ़िए जो स्क्रीन पे आ रहा है। फाइल्ड अप टू 30th day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing the relevant annual return whichever is earlier। तो इन्होंने इसमें 20 अक्टूबर नहीं 30 नवंबर की एक्सटेंडेड डेट को भी मान लिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 16/4 की जो मेरी डेट लैप्स होगी वो 20 अक्टूबर को नहीं होगी, अब 30 नवंबर को ही मानी जाएगी उस साल की। अनदर कॉम्प्लिकेशन विच दे हैव रेज्ड हियर, ये बहुत बारीक चीजें इन्होंने डाल दी हैं जो कोई नहीं देख रहा, लास्ट वाला सब देख रहे हैं 30 दिन वाला। तो ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन से 30 दिन बाद या ऊपर वाला, दोनों में से जो बाद में हुआ। तो अगर रेवोकेशन 30 नवंबर के बाद हुआ तो जो रेवोकेशन की डेट है उससे 30 दिन बाद तक आपको अवेलेबल है, बट जो लैप्स नहीं हुआ था उसके लिए भी आप 30 नवंबर क्लेम कर सकते हो। ये एक फाइट है जो हम एक जगह कर भी रहे हैं और अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिला है। उनका ये कहना है कि उसी साल की 16/4 की डेट मानी जाएगी, 16/5 वाली डेट उसमें नहीं मानी जाएगी, विच इज अ डबल क्रॉस। तो इसको सॉल्व करना है सर। दिस इज समथिंग विच अगेन नीड्स मोर स्टडी, वी आर स्टक हियर। दिस इज अ प्रैक्टिकल केस, इट्स अ प्रैक्टिकल केस। सेक्शन 150 सबको पता ही है कि जिसने पे कर दिया उसको रिफंड नहीं मिलेगा, तो जिसने भी पे कर दिया है एज प्री डिपॉजिट उसको आप 150 में मत मानिए। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। फाइलिंग का जो गाइड है वैसे तो सबको पता है, बट पीपीटी में मैंने डाल दिया है, जिसको नहीं पता हो तो वो लोग इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको कर सकते हैं। और एक इसमें बात है कि जो आपने एप्लीकेशन लगाई उसको ऑफिसर को भी 3 महीने में क्लोज करना है, प्रोसेस करना है, और अगर वो नहीं करेगा तो इट विल बी डीम्ड टू बी अलाउड। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज फेवरिंग द टैक्स पेयर। इसमें बहुत ज्यादा और बात करने की नहीं है। अगर कोई प्रश्न है इसमें तो आप पूछिए, नहीं तो मैं 128A में जाती हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सिक्सटीन 4 का कट ऑफ डेट के बाद फाइल किया, किसने किसमें क्लेम कर लिया? सप्लायर ने बाद में किया, तो ये तो 16/4 का केस है ही नहीं सर। हाँ ये हो रहा है, बट ये अलग मुद्दा है, ये अलग इशू है, बट ये एमनेस्टी का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि 2A में नहीं आया इसलिए हम उसको 16/4 में नहीं मानेंगे। ये तो कहीं 16/4 में लिखा ही नहीं है। वो तो मार्च 19 की एक्सटेंडेड डेट के लिए लिखा हुआ है सर। पहली बात मुझे ये बताइए कि सप्लायर के डिटेल्स अपलोड होने से ही आईटीसी एडमिसिबल होगा, ये किस डेट से इफेक्टिव हुआ? नहीं, 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 से 16(2) में क्लॉज AA ऐड हो गया, जिसने ये बोला कि जब सप्लायर डिटेल्स इनवॉइसेस की अपलोड करेगा उसके बाद आपका कंडीशन सेटिस्फाइड माना जाएगा। तो 31 दिसंबर 2021 तक ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जो ये बोले कि सप्लायर ने बाद में लगाया या नहीं लगाया तो आपको नहीं मिलेगा। जब तक वो नहीं आता तब तक तो 16(4) आ ही नहीं सकता, क्योंकि 16(2) नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, उसमें बाधा लगेगी तभी तो 16(4) से उसको नापोगे। और 16(4) तो सप्लायर की बात ही नहीं करता, वो तो खुद के रिटर्न लगाने की बात कर रहा है ना। हो रहा है, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि ये प्रैक्टिकली हो रहा है, बट ये लीगली सस्टेनेबल नहीं। इट इज नॉट लीगली सस्टेनेबल, इट इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, क्योंकि वो आने की जरूरत ही नहीं थी।
तो अब जब 2A में नहीं आया, इसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है? पहली बात तो कि लीगली टेनेबल ही नहीं है, ये डिमांड खराब है। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है और ऐसी शंका अगर आती है, तो जब 2A में नहीं आया, लेट आया या नहीं आया, दोनों में से कौन सा चीज ज्यादा सीवियर है? लेट तो आ गया तो पता तो चला कि है, अगर नहीं आया तब तो बिल्कुल ही फेटल है। उसके लिए कुछ उपाय बताए सर्कुलर ने कि डिक्लेरेशन दे दो कि भाई मैंने टैक्स पे कर दिया है, मुझसे लेट हो गई लगाने में, चलो वो लेके तो कर दो, इसमें डिस्प्यूट क्या है? इसमें तो एमनेस्टी की कोई बात ही नहीं है। तो आगे चलते हैं। वो भी नहीं होगा क्योंकि दोनों में ही नो पेमेंट का, हाई कोर्ट्स में गिव दिस। यस 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 प्लीज। That is the prerogative of the Honorable Court only, and if this judgment can be taken further, then it will result in more relief. जो मैं सर को कह रही थी कि सर इस चीज को लिटिगेट कर सकते हैं क्या, इस पे थोड़ी सा प्रकाश डालिएगा, तो these kind of judgments may come. Now it may depend upon the facts of the case also, where it may be typical peculiar. We may need to read it in more detail. एंड अगर उसमें एक जनरल इस टाइप का व्यू लिया गया है तो वी शुड रीड फर्दर एंड ट्राई टू इंटरप्रेट इट दैट वे टू टेक द फर्दर बेनिफिट। 16.4 16.5 का वेरी गुड ऑब्जर्वेशन अनवर सर से हम लोग जजमेंट लेके इसको पढ़ते हैं। हाउ फार इट विल स्टे, लेट अस होप इट कैन गो फर्दर। फिलहाल स्कीम ये बोलती है नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट पेनल्टी भी नहीं मिलेगा जो भी पे करा है, क्योंकि इंटरेस्ट पेनल्टी की रिलीफ 16.4 की स्कीम में नहीं है सर, 148 में नहीं है, वो 128A में है। तो वहां कोर्ट को क्या बताया गया और क्या किया गया, वो कब रिव्यू होगा, कब फर्दर अपील होगा, वी डू नॉट नो। विथ ऑल रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, वी शुड रीड फर्दर दैट वेदर the scheme has allowed such kind of petition in the schemes individually or together. We should try to interpret by reading both. तो एक बार और पढ़ेंगे इसको। अब आते हैं हम लोग 128A जो कि अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है। 16.4 तो अपने आप में ही चर्चा में था तो एमनेस्टी की चर्चा कम हो गई, बट 128A में रिलीफ मिली है इंटरेस्ट और पेनल्टी की। तो सर इसका थंब रूल, इस स्कीम को पढ़ने का थंब रूल जो मैंने समझा और मैंने पढ़ा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है, अभी भी मैं जितनी चीजें आपको बोलूंगी शायद हर एक में एक दो इश्यूज निकलेंगे, शायद आप लोग भी मुझे कुछ ऐसे व्यूज देंगे जो मेरी बात से मैच नहीं होगा, या मैं खुद भी उस पर भरोसा नहीं कर रही हूं बट लिखा मुझे ऐसा ही समझ आ रहा है। तो इस तरह की बातें निकलेंगी। इसमें थंब रूल हमने ये माना कि जब भी हमें समझने में दिक्कत हो तो हमें पहले ये देखना है कि टैक्स का अमाउंट डिटरमाइन होके पे हो जाए, उसके बाद ही इंटरेस्ट पेनल्टी की रिलीफ की बात आएगी। जब तक टैक्स डिटरमाइन नहीं हो रहा और फिर पे नहीं हो रहा तब तक ये स्कीम अवेल ही नहीं की जा सकती। और इसमें 75(2) की बात भी है जो कि हम लोग बात करते करते सिनेरियोज में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्कीम लाई गई डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करने के लिए। एक तरीके से ये रूप दिया गया जो कि शुरू में जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था तो ऑनरेबल पीएम ने कहा था कि इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये एक नया लॉ है, तो कोई भी गलती होने पर किसी को भी पनिश नहीं किया जाएगा, आप लोग इसे स्वीकार करें। तो उसके जवाब में अब इसे लाया गया है कि भाई पहले 3 सालों में अगर आपसे कोई टैक्स का पेमेंट छूट गया तो आप टैक्स पे कर दो, हम इंटरेस्ट पेनल्टी माफ कर देंगे। इस भावना से इसको लाया गया है। 3 ही साल कवर हुए, पहले 3 साल, जिसमें से कुछ समय कोरोना में शुरुआत हो गई थी, उसके बाद का पीरियड तो कोरोना का था तो उसमें कुछ अलग रिलीफ दी थी, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करा। तो अगर हम ये माने कि 3 सालों की रिलीफ दी है उन केसेस में जिनमें फ्रॉड सप्रेशन नहीं है। अब जब मैं बोलूं कि फ्रॉड सप्रेशन नहीं है तो इन्होंने इसको ऐसा बोला कि सेक्शन 73 का नोटिस या ऑर्डर है। अब इसमें आके एक परेशानी ये खड़ी होती है कि जब 73 का टाइम लॉस हो जाता है
तब डिपार्टमेंट 74 में नोटिस देना शुरू कर देता है, भले ही उसमें फ्रॉड सप्रेशन है या नहीं। तो वो केसेस के साथ जस्टिस नहीं हो पाया। वो कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, दैट इज नॉट मटीरियल, बिकॉज द स्कीम ओनली टॉक्स अबाउट नोटिसेज एंड ऑर्डर्स इशूड अंडर सेक्शन 73। अब वो अगर सेक्शन 74 में इशू हो गया, लेकिन हमें लगता है कि ये तो 73 का था तो हमारे साथ गलत हो गया, तो राइटली एज अनवर भाई हैज पॉइंटेड आउट, देयर इज अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 2। अब इस पे भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी आगे जाने के लिए, स्कीम में जाएंगे हम लोग, बट इसमें थोड़ी सी बात मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि 75(2) को अगर आप लोग सब पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, मैं एक बार रीड करके बताना चाहूंगी। अनवर भाई ने तो आज इसका बेनिफिट लेते हैं। We will read it word by word. Where any appellate authority or appellate tribunal or court concludes that the notice issued under subsection 1 of section 74 is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under subsection 1 of section 73. ये इन्होंने बोला अपेलेट अथॉरिटी, अपेलेट ट्राइब्यूनल और कोर्ट के लिए कि अगर कोई नोटिस 74 में जारी हो गया था बट उसमें फ्रॉड, सप्रेशन, मिसस्टेटमेंट के चार्जेस विथ इंटेंशन टू एवेड टैक्स प्रूव नहीं हो पाया, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है या अपेलेट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि वो नोटिस 73(1) में जारी हुआ था, ऐसा माना जाएगा। और जब ऐसा माना जाएगा तो उन केसेस को इस स्कीम ने एक्सेप्ट किया है कि इन केसेस में जब ये माना गया कि ये 73 में है जबकि ओरिजिनली नोटिस 74 में था, तो उस केस में आप लोग इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर क्लेम कर सकेंगे। और उसके लिए टाइम लिमिट बताई अलग से, 31 मार्च 2025 जनरल टाइम लिमिट है, और 75(2) के ऑर्डर्स के लिए क्या टाइम बताई, कोई बताएगा? डेट, ऑर्डर डेट से 6 महीने कि 3 महीने, ठीक है। तो ये रहा। अब इसमें सर मेरा एक सवाल है कि इसमें बताया गया एपेलेट अथॉरिटी, एपेलेट ट्राइब्यूनल और कोर्ट, और इसका व्यू ये निकल रहा है जो कि डिपार्टमेंट भी मान रहा है और बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल्स भी मान रहे हैं कि जब 75(2) में इन्हीं 3 का नाम लिखा गया, तो जब नोटिस जारी होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कभी भी 74 को 73 में डीम नहीं कर सकती, ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती, उसको 74 में ही करना पड़ेगा। इज दिस इंटरप्रिटेशन करेक्ट? प्लीज। I will like to hear from you, sir, on this. अभी तक तो मेरे नॉलेज में नहीं है मैम, अगर कुछ है तो प्लीज शेयर करिएगा, बिकॉज एपेलेट अथॉरिटी ऐसा कर सकती है ये बोला, बट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर चार्जेस ही प्रूव नहीं हुए तो वो कैसे नहीं कर सकता, इस बात पे हम सर से सुनेंगे। मैं आगे स्कीम पे आती हूँ। तो 75(2) हमने समझ लिया, और 75(2) के जो ऑर्डर्स होंगे जो कि नेसेसरीली फिलहाल सिचुएशन में एपेलेट अथॉरिटीज के ही आ रहे हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के नहीं आ रहे हैं, उनमें भी ये स्कीम में इंटरेस्ट पेनल्टी का बेनिफिट लिया जा सकता है आफ्टर फुल पेमेंट ऑफ टैक्स। दूसरा थंब रूल इस स्कीम का ये है कि जब तक हम टैक्स पूरा पे नहीं कर देते और ऑर्डर के साथ उस पेमेंट ऑफ प्रूफ को अटैच नहीं कर देते, तब तक हम अपना एमनेस्टी स्कीम का एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। तो शायद जो अनवर भाई कह रहे थे कि बहुत लोग कर ही नहीं पा रहे हैं या अभी तक इस स्कीम में काम ही नहीं हुआ है, उसका रीजन यही होगा कि लोगों ने अभी तक पेमेंट करा नहीं है। तो वी शुड एडवाइज द क्लाइंट्स टू पे एंड टेक एडवांटेज ऑफ द स्कीम, अदरवाइज टाइम अगर ओवर हो गया
तो एप्लीकेशन नहीं लग पाएगी। अब मैं फिर से टाइमलाइन पे आ रही हूँ कि 31 मार्च 25 जो टाइमलाइन मैंने बोली वो पेमेंट की है। एप्लीकेशन लगाने के लिए 3 महीने का समय और मिलेगा। तो 3 और 6 का जो सवाल मैंने पूछा वो 3 महीने पेमेंट के डेट खत्म होने के बाद भी आपके पास 3 महीने का टाइम है एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए। तो लोग बैठे हैं कि 31 मार्च तक पेमेंट करा लेते हैं, आराम से मार्च के बाद लगाएंगे। अभी रिलैक्सिंग पीरियड है टैक्स प्रोफेशनल्स का। द स्कीम शुड बी अ सक्सेस आई बिलीव। और उसके बाद जो ऑर्डर्स आते हैं एपेलेट अथॉरिटी के, उन सारे ऑर्डर्स के लिए ऑर्डर की डेट से 6 महीने तक का समय दिया गया इसको कंप्लीट करने के लिए पेमेंट को। और फिर पेमेंट के बाद फिर 3 महीने। ठीक है, यहां तक हम लोग साथ साथ हैं? किसी का कोई और व्यू है तो प्लीज बोले। ओनली इंटरेस्ट पेनाल्टी के जो नोटिसेस हैं उसमें पेमेंट नहीं करना है। अगर टैक्स पेड है तो उसके प्रूफ के साथ एप्लीकेशन फाइल करनी है। 3A होगा या फिर आपका लाइबिलिटी अगेंस्ट डिमांड पे हुआ होगा। सेल्फ एसेस लाइबिलिटी स्कीम में कवर्ड नहीं है, उस पर भी बात करेंगे, आऊंगी मैं। वो एक एक्सक्लूजन है जिसका इंटरप्रिटेशन समझना है हमें, किसे कहते हैं। इंटरेस्ट पेनल्टी के नोटिसेस अगर 3B के वजह से आए हैं तो वो कवर नहीं होगा क्योंकि वो सेल्फ एसेस लाइबिलिटी है, तो उसके अंदर कवर होगा, उसको समझेंगे। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। शुरू में थोड़े से बेबी स्टेप्स लेते हैं ताकि सबको क्लैरिटी रहे। वेवर 2 चीजों का है, इंटरेस्ट और पेनल्टी। अगर हमने 10 रुपए का भी टैक्स का उसमें आर्ग्यूमेंट किया, रिड्यूस करने की रिक्वेस्ट की, तो हम स्कीम के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। जितना टैक्स उसमें लिखा है पूरा देना है। जैसे कि 16(4) के ऑर्डर की एक बात हुई कि कोई ऐसा ऑर्डर हो जिसमें 16(4) हो और दूसरा इशू भी हो, तो उसमें वहां एनेक्शर ए में तो हमें दूसरे वाले को छोड़ देना है, 16(4) वहां से माफ होगा। अब जो बचा वो यहाँ पे करके इसमें अटैच करना होगा। वो जब ऑर्डर पास होगा तो उसका अमाउंट कम हो जाएगा, वो अमाउंट पेमेंट का प्रूफ इसमें लगाएंगे उस ऑर्डर के साथ, तभी एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। तो पहले 16(4) खत्म करके फिर 128A में आना है। अगर दोनों हैं तो डायरेक्ट 128A नहीं जा सकेंगे। क्लियर है? टैक्स जमा कराना है, अगर आप पहले से पे करा दो तब भी आपको 16(4) का ऑर्डर तो लगेगा एमनेस्टी का, उसके बाद ही आप जा पाएंगे। तो पहले 16(4) का काम खत्म करना है। उसके बाद जो बचा हुआ टैक्स है, अगर आप उसके ऊपर लिटिगेट करेंगे तो आप एमनेस्टी में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपने अपील भी लगाई है तो विड्रॉ करो पहले, ये बोलता है। और जो रूल अपील विड्रॉल का है वो ही रिट पिटिशन का है, वो ही एसएलपी का भी है। एफएक्यू में दिया हुआ है कि एसएलपी को भी सिमिलर प्लेटफॉर्म पे ट्रीट किया जाएगा। उसे विड्रॉ करना है, उसके बाद ही उस ऑर्डर को लगा के क्लेम करना है। एपेलेट ऑर्डर, writ petition, appeal filing, writ petition and SLP, all if any filed need to be withdrawn before claiming 128A, और withdrawal के बाद ही करना है। नहीं, SLP अगर किसी की पहले से फाइल्ड है तब APL 4 आएगा, तो SLP तो आएगा ही नहीं। आप APL 4 की बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें क्या हुआ? 10 रुपए के लिए आप पे करेंगे और अगर आप अपील में जाएंगे तो आप एमनेस्टी नहीं ले सकते। आपको जो भी ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट एमनेस्टी लेनी है इंटरेस्ट और पेनल्टी की, उसमें 2 कंडीशन है। प्राइमरी 2 है, ऐसे तो बहुत सारी है। प्राइमरी 2 है, पहली कि मुझे उसका पूरा टैक्स पे करना है बिना डिस्प्यूट किए, और दूसरा पेमेंट करके ही मुझे ऑर्डर की कॉपी और पेमेंट प्रूफ के साथ ही मुझे एप्लीकेशन लगानी है। एनहांस को आप एक्सेप्ट करोगे कि आप फाइट करोगे? इसका आंसर इसी में है। फाइट नहीं करेंगे तो एनहांस्ड हो या रिड्यूस्ड हो, यू कैन क्लेम एमनेस्टी फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बाय पेइंग द फुल टैक्स डिसाइडेड अपॉन यू। जो भी टैक्स डिटरमाइंड है उस ऑर्डर में, उसकी एमनेस्टी 73 के अंडर इंटरेस्ट पेनल्टी की मिलेगी। इफ योर लाइबिलिटी इधर एनहांस्ड और रिड्यूस्ड बट अंडर सेक्शन 73 इज फुल्ली पेड, यू कैन टेक वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। एकदम क्लियर, ऐसा ही थॉट प्रोसेस रखना है हम लोगों को, तो दिक्कत नहीं होगी।
3 साल है, 17, 18, 18, 19, 19, 20 सेक्शन और रूल हमें पता ही है. तो full amount of tax liability under the relevant notice, statement or order has to be paid before 31st March 2025. If appellate authority directs the demand under section 73, 75(2) वाला, तो within 6 months from the date of order. ये basic है. कवरेज में हमने देखा कि सेक्शन 73 के जो नोटिसेस पेंडिंग एडजुडिकेशन है वो भी कवर हो रहे हैं. ऑर्डर्स पास्ड अंडर 73 बट नो ऑर्डर इशूड बाय अपेलेट अथॉरिटी वो भी कवर हो रहे हैं. ऑर्डर इशूड बाय अपेलेट अथॉरिटी बट नो ऑर्डर इशूड बाय अपेलेट ट्राइब्यूनल वो भी कवर हो रहे हैं उसको विड्रॉ करके बाय वे ऑफ विड्रॉल इफ अपील हैज बीन फाइल्ड बट नॉट डिसाइडेड. केसेस इन्वॉल्विंग रीडिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम 74 टू 73 जो 75(2) है. तो ये इतने केसेस इसमें कवर्ड है. Limitation for what? Section 73? Okay. When we go to the writ court, okay. If he passes the order, then only, na? He has to pass because court has directed. So whenever there is a lawful order, and that is redetermining it from 74 to 73, only then this time limit is coming. So then it will go into the first case. Because the time has been extended by honorable court, but now it is a notice which is pending for adjudication. So it will come under SPL 01. Otherwise, appellate orders come under SPL 02. Here your case has gone back to square one where the officer will redetermine as per court's order. So their time is not relevant. He has to comply by the court's order and then it will fall under the first category. He will file SPL 01 based on the order which the authority passes. The day he will claim the amnesty, that day it is an order pending adjudication. Before 1st November or after 1st November also it is admissible, sir. Either ways, because the terminal date is important here, opening date is not important. The financial years are important. Two things are important, the financial year, rather three, section 73 and the terminal date of the scheme. And you have to categorize between SPL 1 or SPL 2. And you can file under the respective form. If it does not allow on the portal, you will have a technical issue because the timeline may not be allowed by the portal because it is extended by honorable court. So this technical glitch will again have to be resolved with the help of the help desk. आप या तो एक माइक दे दे फ्लोर पे ताकि वो जोर से बोले तो सबको समझ में आए. Very good issue. Please speak loudly. रिकवरी हो गई कि पेमेंट हो गया और वो रिकवरी अमाउंट इंटरेस्ट पेनल्टी का इंक्लूडिंग है. बोथ आर अलाउड. बोथ आर अलाउड. तो वो जो पेमेंट हो गया हेलो मेरे को DRC 700 रुपीज की हुई और उस पर इंटरेस्ट 18 रुपीज लगा और पेनल्टी 10,000 और डिपार्टमेंट ने क्या किया कि मेरे क्रेडिट लेजर से 100 रुपीज को रिकवर कर लिया और कैश लेजर में बैलेंस 0 था
जिसके कारण इंटरेस्ट पेनल्टी की रिकवरी नहीं हुई। आज के डेट में मैं उसको कैसे जस्टिफाई करूंगा? नहीं, पेमेंट को। रिकवरी होने नहीं होने से एमनेस्टी स्कीम का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं बदलता। पॉइंट नंबर 1, रिकवरी हो गई, वो एक्सेप्टेबल भी हो सकती है, वो लिटिगेबल भी हो सकती है। तो पहला आप ये डिसाइड करिए कि आप उस पेमेंट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। पेमेंट को एक्सेप्ट करके मैं एमएसटी एसपीएल 2 लगाना चाहता हूँ। करेक्ट, तो लग जाएगा, आपका दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आ रही है जी, तो ये टेक्निकल ग्लिच है, इसको सॉल्व करना होगा। मेरे पास भी ऐसे 2 केस हैं। माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि मेरी कोई लाइबिलिटी थी जिसको मैंने डीआरसी जीएसटीआर 3B के थ्रू क्लियर कर दिया नेक्स्ट ईयर बिफोर प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड। In spite of the proper officer issued DRC 7, in that case हम कैसे उस पेमेंट को जस्टिफाई तो आप तो दोबारा पे ही नहीं कर पाएंगे, तो उस केस को तो आपको फाइट ही करना चाहिए। वो एमनेस्टी का मुद्दा ही नहीं है, वो लिटिगेशन में चला, वो लिटिगेशन मैटर है, वो एमनेस्टी मैटर ही नहीं है। आपको उसको फाइट करना है कि पेमेंट का प्रूफ ये है, आप इसको क्लोज करिए। पेमेंट ड्यू ही नहीं है तो आप पे क्या करोगे? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हमारी कोई पेमेंट हुई है जिसमें हम कॉज ऑफ पेमेंट कुछ गलत लिख दिए हैं, वॉलेंट्री नहीं लिखे हैं, लेकिन वो पेमेंट उसी चीज की है, ड्यूज की अमाउंट की। डीआरसी 3 से? हाँ, डीआरसी 3 से। तो 3A लगाइए और क्लेम करिए। तो उसमें कहता है वो कि वॉलेंट्री या अदर के केस में ही वो जीएसटीआर 3A लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। एरर आ रहा है आपको? नहीं, वो लॉ में कह रहा है, नोटिफिकेशन में नहीं। आप उसको मत गौर करिए, अगर वो आएगा तो हम उसको क्लरिकल एरर बाद में बताएंगे। आपका वो पेमेंट अगर कैप्चर हो रहा है 3A में, आप 3A फाइल करिए। मैंने अंडर प्रोटेस्ट के पेमेंट के साथ फाइल किया है, मेरा एडमिट हुआ है सर। 3A में जब हम जा रहे हैं तो वो उसको नहीं ले रहा, दिखा नहीं रहा है, वो रेड से मैसेज आ जा रहा है वहां पे। क्या लगाया है आपने उसमें? मेरा वॉलेंट्री की जगह क्या लिखा था उसमें? उसमें जीएसटीआर 3B और R1 का मिसमैच था। तो वो अगर कोई पर्टिकुलर डिमांड का इंडिकेटर है तब तो फिर वो नहीं हो पाएगा। वही इशू आ रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी डिटरमाइंड डिमांड का पेमेंट था, तो वो नहीं हो पाएगा। अगेन इट विल गो आउट ऑफ द एमनेस्टी स्कीम एज सच, उसको लड़के ही निकालना पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये आ गए इंक्लूजन्स। अब एक्सक्लूजन्स देखिएगा, इसमें थोड़ी बातें इंपॉर्टेंट है। नहीं हो रहा है सर। This is a procedural issue and I have underlined it also. You may see my booklet because this is not workable. जब तक आप उसको रिड्यूस नहीं कर रहे हो, आप 128 को प्रॉपरली फाइल नहीं कर पाओगे। SPL 1-2 आपका जाएगा नहीं थ्रू, तो वो ऑर्डर लेके करने से एकदम स्मूथ निकल रहा है। There is no issue. They simply have to pass an order for your first claim and then you can easily file SPL 2. तो वो बेस्ट तरीका है। अगर इसमें हम जा रहे हैं तो हम प्रैक्टिकली कर नहीं पाएंगे, फिर हमें सॉल्यूशन ढूंढने कहीं जाना पड़ रहा है, ये दिक्कत कर रहा है। वही बात है, 16.5 में उतनी तकलीफ नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि अब वो कानून बन चुका है सर। बट अगर सिस्टम कुछ थ्रू नहीं जा रहा है ना, वो सिर्फ कंप्लेंट डालते रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। So my recommendation is you do both, first 16.4 then go to 128A. But if you are able to manage it without doing it, there is no harm because the circular supports it. System is not supporting and system is not the law, we all know. वही बात, तब तो कभी नहीं होगा।
जब आप पेमेंट कर रहे हैं और किसी SCN के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, तो हाउ यू कैन चूज अगेन वॉलेंट्री पेमेंट? अर्लियर दैट टैक्स पेमेंट, लोगों ने क्या किया कि 128 आने के उपलक्ष्य में उन्होंने टैक्स रखा कि इंटरेस्ट और जो हमारा पेनल्टी वो तो बाद में वेवर होगा, जब तक आना था इसका प्रोसीड्योर सारा। तो जब भी उन्होंने DRC 0 किया तो वो DRC 03 में उन्होंने पेमेंट अगेंस्ट SCN वर्ड यूज किया। जब पेमेंट अगेंस्ट SCN यूज कर रहे हैं तो उसको 3A में सेटअप करने नहीं दे रहा, वहां कह रहा है। आप ये बताइए कि वो जो SCN है वो वैलिड SCN की कैटेगरी में आता है? हाँ, वो वैलिड सेक्शन 73 हाँ, और उसी पीरियड हाँ, का वो सारा कुछ और वही आपने है। पेमेंट करा है? हमने टैक्स पेमेंट कर दिया, बट ताकि सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा। अब क्योंकि टैक्स का पेमेंट करने के समय DRC 03 में हमने पेमेंट में जो मोड चूज करना होता है वॉलेंट्री और ये, वहां पे हमने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया अगेंस्ट SCN। कोई इशू नहीं है सर। अब ये लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल ग्लिच है, और सॉल्व ये कराइए। 3A में ये वाला SCN लोग इशू करने, Solve डिपार्टमेंट कराइए। को भी कहा है, तो वो भी अभी इस पे लगे आप क्लेम इसके स्क्रीनशॉट और डिटेल के साथ डालिए। आई एम होपफुल दैट इट शुड बी सेटल्ड। इट्स अ वैलिड केस। ऐसे जहां वही है, SCN अगर आप वही वाला है ना, वॉलेंट्री वर्ड यूज किए होते DRC 03 में तो यहाँ लेता है, नहीं तो वो नहीं ले रूल रहा। नहीं है। ये हमने कमिश्नर से भी डिस्कस किया है। अलाउ करेंगे ये, वो उसमें रूल में उन्होंने डाला हुआ है वहां पे। सबकी क्वेरी एक ही है। मैं एक ही बात वापस बोलूंगी कि अगर जो क्राइटेरिया है कि नोटिस जिसका ऑर्डर पास नहीं हुआ और अगर वो इन 3 सालों का है, उसका टैक्स पे हो गया, भले ही वहां कैटेगरी कोई सी भी चुनी हो, SCN या वॉलेंटरी, स्कीम और सेक्शन दोनों ही, कोई ऐसी बात नहीं कहते कि वो नहीं चुनोगे तो नहीं मिलेगा। पोर्टल से लॉ नहीं बन रहा। तो अगर टेक्निकली कोई चीज मिस हुई हो, प्रोग्राम का बग है, आप कंप्लेन फाइल करिए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बट वो नोटिस उन्हीं 3 साल का होना होगा और सेक्शन 73 का होना होगा और ऑर्डर नहीं होना होगा। अगर ऑर्डर है तो SPL 2 में जाइए और वहां पे आपको अटैच करना है। अगर आप कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं आया था और हमने पे कर दिया था, तो उस केस में SPL 1 लगता है, 2 नहीं लगता, और उसमें 3A नहीं होता। नहीं, ऑर्डर आया था मैम, ऑर्डर आया तो SPL 2 में आपको 3A लगाना है। हाँ, और उसमें आपका चालान DRC 3 शो नहीं कर रहा। टैक्स हमने DRC 03 से पेमेंट किया। प्लीज फाइल अ टेक्निकल कंप्लेंट। नहीं सर मैम, वहां पे लिखा हुआ है कि आपको DRC 3A यूज करने के लिए पेमेंट मोड वॉलेंट्री ही होना चाहिए। वो उन्होंने प्रोग्राम वैसा बनाया, उन्होंने लिखा है, और नहीं है तो फिर उसके लिए रिट कर दीजिए सर। उसके लिए रिट फाइल करिए कि ये कहाँ लिखा है कि वॉलेंट्री आपकी लेना। बात सही है कि वो जो ओरिजिनल स्कीम है वहां ये बात नहीं लिखा हुआ। 128A में आपकी बात में ही आपका जवाब है। जब आप SPL 2 लगा रहे हो मतलब ऑर्डर पास हो गया, तो वॉलेंट्री कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना। वही क्वेश्चन था कमिश्नर को कि जब हम पेमेंट अगेंस्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो व्हाई वी चूज वॉलेंट्री? हम ऑर्डर के पहले करेंगे पेमेंट, तब तो हम वॉलेंट्री यूज करेंगे। फाइनल कंक्लूजन ऑन दिस क्वेरी that this is a lapse of the system, this is not the law, we should challenge it. First try with technical complaint. सर्कुलर इसको बिल्कुल भी बार नहीं करता है। सर्कुलर 2 ही चीज कहता है, नहीं होगा। इसका आंसर इसमें नहीं है। मैं पढ़ देती हूँ 16 नंबर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेरी बिफोर वी फिनिश द स्लाइड्स बिकॉज वी विल रन आउट ऑफ टाइम। In case of application in form number GST SPL 2, where the applicant has paid full or partial amount of tax through form DRC 03, whether the said applicant is mandatorily required to file application in 3A for such tax amount which he desires to get adjusted. Yes, तो 3A तो लगाना ही है, हम कहाँ कह रहे नहीं लगाना है, बट 3A लगाते वक्त वो उस DRC 3 को पिक नहीं करेगा, ये कोई कानून नहीं कहता। It says in cases where order in DRC 7, form DRC 8 or APL 4 as the case may be has been issued and such taxpayer has paid the required amount through DRC 3, such applicant is required to adjust the amount. Voluntary की कोई बात ही नहीं है। So it is a technical gap. You first file a technical complaint. If they don't respond or correct it, you may approach the honorable court in that case. I'll quickly move forward. I have 5 minutes officially, but I'll take 10 minutes because I have some time to bring out from the tally the demo that we saw. So please give me a grace of 5 to 7 minutes more. Okay, so please pay attention. The due date for filing applications is
3 months from 31st March, so it is 30th June. And conditions and procedures, we all know that we have to withdraw the appeal or writ petition or SLP and then file the form. And we also have to take the approval of the department. Approval of the department will come in form number SPL 5. If there is a doubt in the mind of the authority and he feels that your application is not possible to allow, it is against the scheme, then he will issue you a notice under SPL 3. You can file reply in SPL 4 and the rejection can come in SPL 7. No refund in case of interest and penalty if already paid by the taxpayer earlier. ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, राइट साइड में देखिएगा, स्कीम नॉट अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन सेल्फ एसेस टैक्स एज पर 75/12. सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है? जो हम लोग खुद 3B में पे कर रहे हैं. तो जो टैक्स 3B में हम पे कर रहे हैं, अगर हमने उसको किया है या में भी ये एमनेस्टी स्कीम लग नहीं सकेगी. लेट फीस के ऊपर भी कोई रिलीफ स्कीम के अंदर नहीं है. टाइमलाइंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. पेमेंट कैसे करना है वो भी हम बात कर ही चुके हैं. 16 नंबर का रेफरेंस भी इसमें मैंने दे रखा है. बट इफ द DRC इज नॉट गेटिंग कैप्चर्ड, इट्स अ टेक्निकल लैप्स, इट्स लॉफुली एक्सेप्टेबल. In case of RCM liability dispute, you cannot pay through credit ledger. For all other demands, you can pay either through credit or through cash. सिनेरियोज हैं, ये वही सारे सिनेरियोज हैं जो कि सर्कुलर नंबर 238 में हैं. तो आप लोग बाद में धीरे धीरे देख सकते हैं. क्योंकि समय की थोड़ी कमी है तो मैं पेनल्टी वाले अमेंडमेंट प्रपोजल पे आना चाहूँगी. इसको कंक्लूड करके इसको मैं एक बार के लिए, क्योंकि हमने सारे सिनेरियो डिस्कस करे अभी ऑलरेडी, कि उन्हीं चीज़ों की क्लैरिफिकेशन है. जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता ही दिया है वर्बली आपको. एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ. यस, द लास्ट वन. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर कोई, मान लीजिए कोई नोटिस या ऑर्डर या डिमांड आया जिसमें कि इसमें 3 साल है, 17, 18, 18, 19, 19, 20. जनरली क्या होता है, CGST वाले एक साथ 4 साल 5 साल का करते हैं. तो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट में नोटिस आ गया 5 साल का या 4 साल का, तो चौथा साल 20, 21 भी इसमें कवर हो गया. स्कीम 3 ही सालों के लिए है. तो इसके लिए सर्कुलर में बताया गया है कि अगर ऐसा कोई नोटिस है तो वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल बी अवेलेबल फॉर द पीरियड अप टू 1920 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड एंटायर टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विल हैव टू बी पेड बिफोर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंडर द एमनेस्टी. मतलब अगर 19-20 तक की इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर दिया है तो 20-21 का आपको डिस्प्यूट करने का हक भी छीन लिया आपसे, कि उसमें डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते. अगर सिंगल ऑर्डर में है, एक ऑर्डर की एक एप्लीकेशन लगाओ, पूरा अनडिस्प्यूटेड टैक्स पे करो, तभी जाके तुम्हारा इंटरेस्ट पेनल्टी माफ होएगा. तो अगर डिस्प्यूट करना है तो फिर पूरा कर लो 4 सालों का, फिर 3 की एमनेस्टी नहीं मिलेगी. सो दिस इज अगेन अ लिटिगेबल क्लैरिफिकेशन गिवन. एंड दिस वन रिगार्डिंग एरोनियस रिफंड, इसमें बोला कि अगर कोई नोटिस या ऑर्डर ऐसा है जिसमें और भी इश्यूज हैं बट एरोनियस रिफंड भी है, तो उस केस में क्योंकि एरोनियस रिफंड की रिकवरी की बात है तो वो भी आपको पूरा पे करना है 31 मार्च के पहले. तो आप डिस्प्यूट नहीं करोगे और आप इसमें नहीं क्लेम करोगे तो आप विथ इंटरेस्ट पेनल्टी उसको पे करो, बाकी का टैक्स पे करो, तो इस बाकी के टैक्स की इंटरेस्ट पेनल्टी की आप रिलीफ ले सकते. तो जहां मल्टीपल इश्यूज होते हैं, कुछ अलावेबल कुछ नहीं अलावेबल, उसके लिए ये क्लैरिफिकेशन आया हुआ है. यू कैन सी द सर्कुलर, यू विल फाइंड आंसर टू मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. Some of them are not seeming to be proper, mostly are practical and possible to execute. तो इसके साथ यही बातों को मैंने पॉइंट वाइज इलाबरेट किया है. इसको एक बार मैं क्लोज करूंगी. ये SPL 1 और 2 भी मैंने बताया आपको
3 और 4 भी बताया, क्या क्या फाइल करना है सब बताया, उन सबको आपके प्रेजेंटेबल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें रखा है। अब मैं बजट के लिए पीपीटी में नहीं जाती हूँ, सिंपल सी एक चीज तो सफारी रिट्रीट सर ने बताई, तो इट मे अगेन सी द light of the court because they have suddenly retrospectively amendment, though in India retrospective amendments have been accepted in the past, and council had said that this is a drafting error, and hence instead of plant or machinery, actually the intention was plant and machinery. So building cannot be treated as plant if it is leased out or given out for any purpose on which taxable supply is declared as turnover and tax is paid. So building cannot be deemed as plant alone because the language there is not plant or machinery but it is plant and machinery. ये एक retrospective amendment अभी propose हुआ है, notify नहीं हुआ है, उसके बीच की क्या developments हैं हम लोग सभी watch करेंगे। और एक जो बहुत important amendment आया कि जब अपील फाइल करते हैं प्री डिपॉजिट सिर्फ टैक्स के ऊपर लगता है, अगर इंटरेस्ट पेनाल्टी की डिमांड होती है तो उसके ऊपर कोई प्री डिपॉजिट नहीं लगता, केवल किस केस में लगता है, जब डिटेंशन ऑफ व्हीकल होता है और या फिर सिर्फ इंटरेस्ट पेनाल्टी का, यस 129, या फिर जब सिर्फ इंटरेस्ट पेनाल्टी के नोटिसेस आते हैं तब नहीं लगता है, बाकी सब में डिपॉजिट लगता है। तो नाउ दे हैव सेड इन डिटेंशन केसेस द प्री डिपॉजिट ऑल्सो विल बी रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस एट 10%। तो जिनमें 25 था उसमें भी 10 हो गया और जिसमें 0 था उसमें भी 10 हो गया। So this is one major change. So 10% in the first appeal and 10% in the appeal before the tribunal when it comes. It has been made uniform for all kinds of demands, tax, interest and penalty in all cases. So uniformity is being maintained. So with this ISD में RCM पहले अलाउ नहीं करते थे डिस्ट्रीब्यूट करना, अभी उन्होंने कर दिया है। यही 2-3 मेजर चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। म्यूनिसिपल फंड, लोकल फंड के डेफिनेशन में थोड़ी चीज़ें दी गई हैं जिससे कुछ क्लियर हुआ है, कुछ वापस कंफ्यूजन हुआ है। तो इफ़ यू आर डीलिंग विद दोज फंड्स इट मे बी रेलिवेंट। अभी समय की सीमा की वजह से मैं 4:45 हो गए हैं एंड वी वुड लाइक टू हियर टू द चेयरमैन फॉर सम पर्टिनेंट इश्यूज। सो विथ रेस्पेक्ट टू द ऑडियंस लिसनिंग वेरी पेशेंटली एंड कोऑपरेटिंग थ्रू आउट, मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ और सर को इन्वाइट करती हूँ उनके एक्सपर्ट व्यूज़ के लिए। I think you must be feeling that you are in a classroom. It was not a seminar, and I think it was not a workshop either. Perhaps you were in your BCom or MCom classes or studying law. But here the chartered accountant was treating you, so I would treat you as a BCom student. At the first place, I would thank her for a deep insight on the subject with a little interactive session. And she has posed certain questions and which I firmly believe are complicated and can be sorted out under a due process of law. At the very outset, the query raised was that if that was the due dates were 31st of November, then why not 1st December? There was a little lapse of 1 day. The answer is simple. Writ courts or appellate courts cannot test the legislative wisdom. That is a well settled law. So the moment a cutoff date was fixed, no court can go into the legislative wisdom and condone a delay of 1 day. The question can be well illustrated on a reading of the section 107 of the GST Act, which permits a 3 months time for filing an appeal and a condonable period of 1 month. The courts have said that nothing beyond that. If you have failed to file, rest in peace.
pay the demand. So therefore, the extensions are not possible and the legislative wisdom cannot be tested. No court can interfere is an answer to the first query. The second is as to whether a proceeding under section 74 can be converted in a proceeding under section 73. The language which was read out is established in a due process of law. The word established occurring in the section is of prime importance, and we need to comprehend that the adjudicating authority is not an appellate authority or a court or a tribunal. Therefore, once having issued a notice under 74, in my humble opinion, the adjudicating authority has no power and or authority to convert that proceeding into a proceeding of 73. Very importantly, in one of the writ matters, a question was raised as to whether the Honorable High Court had the power to convert a proceeding of 74 in a proceeding under 73, the notice having been issued by the adjudicating authority under section 74. The answer of the court in a blink was no. The writ court has no power to go into the shoes of the appellate authority and decide before the issue is decided by the appellate authority. So once a notice is issued under 74, then in an appeal under section 107, a question can validly be raised that the issue of notice under section 74 on the allegation of fraud or willful misstatement or suppression of fact. I may remind you that these are the language used in the erstwhile Central Excise Act also, and that came to be interpreted very recently by the Honorable Supreme Court in the Northern India operating systems. Their lordships referred to the judgment of cosmic dye and chemicals and quoted a paragraph specifically in the one of the last paragraphs while concluding. Their lordships held that unless the element of suppression or fraud or willful misstatement is relatable to an investigation, then no suppression case is made out. In one of the cases I was dealing with very recently was that the Service Tax Authority had taken note of Form 26AS, which is a certificate of deduction of income tax at source, which is said that on investigation it was so. In my humble opinion, getting a data from a third party 26AS cannot constitute a suppression. But then that can be tested not in a writ court but through an appellate remedy. So the question of suppression of fact is later answered by the board also. The board issued a circular pursuant to the judgment of the Honorable Supreme Court in the case of Northern India and reproduced the similar paragraph. Now you will find that right from Navneet Lal Jhaveri to Indian Steamship and then UCO Bank, it is well settled that the circulars issued by the board are binding on the authority. Therefore, one can safely take aid not only of the judgment of the Honorable Supreme Court, which is to be followed mandatorily and is binding under Article 141, but also the circular which has the binding force of law and would be binding. So therefore, in my humble submission, the case of conversion of suppression or willful misstatement has to be made out. Now, important issue was that one CA Ragini Goyal pointed out that the central GST officers were not uploading their orders on the GST portal, whereas
the law required mandatorily filing of the appeal online. And in that context, whether filing of a manual application or an appeal was permissible. Ordinarily, no. But then in one of the writ cases, the High Court directed. But then that cannot be taken as a rule. In a writ jurisdiction, the High Court has plenary jurisdiction. They can call night a day and day a night. So therefore, orders in some individual cases, which are only a judgment in personam, do not make a law, and therefore the law has to be followed in the true spirit. Now the other important question, and I think perhaps the last question that was burning, was pointed out as to whether a money that is recovered by the authority or paid by an assessee, whether if at all he gets a claim of amnesty, whether the amount is to be refunded, rightly put so. See, this is a question that is very difficult to answer. I can tell you that when I challenged large number of orders in a writ petition to challenge the validity of section 16 subclause 4, the thing was being arbitrary, the assessee having paid the tax only on account of some delay in filing the return. I can tell you that before the Honorable High Court, my prayer was that instead of September, the date may be extended to 31st December because that was the due date of filing of annual return. Unfortunately, the High Court did not. When I appeared before the Honorable Supreme Court and the Supreme Court issued notices in the matter, perhaps I believe so, in my humble opinion, that sent a shockwave to the government, and the considerations which were there. Our federation was also instrumental in giving suggestions to the government in light of section 16.4 that was activated, and 16.5 and 16.6 were incorporated under the Act. So now, when the monies are recovered, see, in amnesty, as rightly pointed out by the learned speaker, the money is difficult to get. The government takes, it doesn't give. So therefore, while our petitions in validity matters of 16.4 are pending before the Honorable Supreme Court, we are taking leave from the Honorable Supreme Court for grant of refund in cases where the assessee has paid the money for his convenience of doing business to carry out his own business. And second, it has been recovered by attachment of his bank account or an electronic or a cash ledger account. There, in such circumstances, if leave is granted by the Honorable Supreme Court, then we'll also agitate the issue that the monies which have gone into the coffers of the revenue, the assessee should not suffer, because a person who did not pay stood to benefit by the enactment of the amnesty, whereas an honest person who paid is denied. I think my learned speaker, my dear little sister, has pretty well taken a classroom today, and I think the second session was very enlightening. Notwithstanding the good session and deliberations in the first, I am impressed by the second. Thank you, ma'am. You had given a good deliberation. Thank you all the team for a good and active support and a patient listening. I believe that listening makes you more perfect rather than speaking. Thank you. I will take just 2 minutes. पहले तो ऑर्गेनाइजर्स ने खबर भिजवाया है कि जिन लोगों को किट नहीं मिला है वो कृपया किट ले लें. किट में कुछ लोगों को किट नहीं मिल पाया था. रागनी के बारे में मैं क्या बोलूं, मैंने देखा है कि बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़े सीनियर हो जाते हैं तो वो अपना सीपी सरेंडर करके हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं फॉर 2 रीजंस. वन फॉर अर्निंग, रागनी प्लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. वन फॉर अर्निंग मोर मनी. डेफिनेटली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पैसा ज्यादा है.
पति साहब उदाहरण है उसके। तो दूसरा यू गेट मोर फेम एंड नेम एज वेल। तो रागनी का जो डेलिब्रेशन मैंने बहुत दिन बाद सुना है, कुछ समय ख्याल से गुवाहाटी में शायद, या आई डोंट रिमेम्बर, अभी दो तीन साल के बाद आई हैव हर्ड हर। शी हैज matured. She is anchored to me, I have got a right to say that. तो और मैं उसको प्रपोज करूंगा, रादर सजेस्ट करूंगा, प्रपोज नहीं करूंगा, सजेस्ट कर सकता हूँ, तो भी अपना सीपी सरेंडर करें। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट में डॉक्टर अशोक सराफ के बाद जगह खाली है, तो she can always join there. And the way she has elaborated these intricate provision of 128A, मैंने शुरू में कहा था कि शायद लोग ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कुछ वजह इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, बहुत से लोग समझ नहीं रहे हैं, सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने इन चीज़ों को जिस रूप में रखा है आज आपके सामने, आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। और इसी के साथ और पति साहब के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बस पति साहब अब हैं, मेरे गुरु थे मिस्टर के जैन के बाद अगर मैं पटना में किसी के पास या बिहार में किसी के पास जाता हूँ तो मैं मिस्टर डी पति के पास ही जाता हूँ। इसके साथ मैं सेशन को एंड करना चाहता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स वंस अगेन। आई प्रपोज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्मिथ सौरभ, ही इज नॉट हियर। I know that Smith and his team, because Smith has been, when I was the Eastern Zone chairman of AFTP, Smith was my secretary. I know his capacity and capabilities. But this time he has done it single-handedly. I'll just tell you one petty thing, because when me and Smith went to Mr. D. Pati for inviting him, तो डी पति ने कहा भैया कुछ देखो, कुछ फंड का क्या पोजीशन है बताओ, कुछ नहीं सर हो जाएगा। एंड एट द such a meager amount of 2400, he has arranged this much of, so I know what mehnat is behind all this. So please give a big hand for the Smith and his organizing team. Thank you very much.